हाँ चल बैठ बातें कर। रुक जा भाई, वीडियो तो लाइव बंदे पूरी। डिस्प्ले कैप्चर, यस। सिन सिन सीरीज इन मेड फॉर यू। लाइव हो गया क्या मैं? हाँ मैं लाइव हो गया हूँ भाई। Alright guys, welcome back to my YouTube channel. ना ना अभी आई स्टार्टेड ब्रो, आई स्टार्टेड, डोंट वरी। ये तो पुरानी वीडियो, इट्स माइनक्राफ्ट गेम प्ले, नो कमेंट्री, पार्कोर। कितनी, 1 घंटे 20 मिनट की। म्यूट करके, हाँ वी गो। अब इसको बंद करो। हाँ हाँ भाई चलो, आई एम लाइव, स्टार्ट करो। यू गाइस वांट लिंक? Of लिंक course, भेज भाई। I want your link. I mean, no. भाई तू चुप हो, ऐसी डीप Sorry, बातें नहीं करनी भाई, पकड़ा यू आर my जाएगा। द bad. पुलिस, स्पाइसी लिंक्स। पुलिस ले जाएगी, पुलिस। पुलिस रैप पुलिस। एयरपोर्ट भिजवा देंगे हमारे ऑस्ट्रेलिया से। डीप बातें करनी थी नहीं का। आप तो बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं भाई ओनली अब। चलो भाई, लिंक चाहिए So क्या welcome back guys. योर चैनल ओपन लिंक, मुझे मालूम थैंक यू नहीं फॉर। अब। लो भाई, जनरल में पड़ी लिंक। New gamer. भाई भाई तेरा नया लाइव, चैनल पुराना चैनल है भाई, ये। इसमें भी भाई, इसमें भी 3000। हाँ इसकी वीडियोस नहीं देखी ना तूने, सारी प्राइवेट है मेरी इसकी, मैंने डिलीट ही कर दी थी इसकी हाँ, good parkour. अभी बस इसको पूरा full screen करके रखना है. हाँ चलो भाई एक्चुअल लाइव कर रहा था तो। स्टार्ट करो Yep, भाई। yep. भाई कितनी देर लगती है लाइव करने में? So guys, welcome back to the YouTube channel. ना आज हम भाई बात करने वाले हैं अपनी लाइफ को लेके, रिग्रेट्स को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके। टाइटल तो चेंज कर ले यार। कहाँ है यार, तू टॉक्सिक का हो रहा है मेरे से? टॉक्सिक क्यों हो रहा है? जनरल पे डाल देता हूँ वो पीपी वाले सर्वर पे। डाल दे, टाइटल क्या डालूं? हाँ अबे सेक्स, लेट नाइट टॉक सेशन विद बॉयज। लेट नाइट तेरे भी Where go with? सेशन विद बॉयज। थंबनेल चेंज नहीं कर रहा मैं अब, मेहनत लग जाएगी। मत करो भाई। भाई भाई तो स्ट्रीम, अपना स्ट्रीम ठीक चल रही है? बढ़िया चल रही है। हाँ 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 तो बस ठीक, बढ़िया चल रहा है. ठीक ठीक। हाँ चलो स्टार्ट करो भाई। क्या बात करना आज? सिंस चलो, एमजे, let's begin. एमजे, बोल if you भाई। will ever fall in love, या will you like still love the person if they try to kill you, MJ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। I know bro, आगे बताओ आप। पैरी कर दूंगा। क्या पैरी। पैरी कर दूंगा क्या होता है भाई? भाई भाई तू खराब कर रहा है यार, सेशन अच्छा होना चाहिए भाई। देख फिर मैं डीप जाता हूँ, देख अच्छा जा। मान ले तू अपनी लाइफ, मतलब यू आर लाइक, मैं इस बंदे के साथ मरने के लिए रेडी हूँ भाई, यही बंदा, बंदी बंदा यार, बंदी बंदा, यही बंदी बंदा इज लाइक माई जी। Your G spot. वेरी डीप भाई। यही बंदा मेरे साथ है, मैं मतलब इसके साथ मर जाऊंगा, जी लूंगा। एंड इफ देन दे ट्राई टू, एक रात को तू सो रहा है सोफे पे, ठीक है, दे कम, दे ट्राई टू स्टैब यू एंड शिट। They come. व्हाट? ओए चुप हो जा, डीप आवाज में बोल रहा हूँ, समझा? हेवी हेवी आवाज कर दूंगा भाई। तो बता Really? I'm मुझे, sorry. लाइक तू सुबह उठे और फिर यू लाइक यार इसने मुझे स्टैब किया, विल यू स्टिल लव हर? है मुझे हाँ, एकदम सुबह उठ के अरे स्टैब कर दिया मेरे को भाई. रुक जा, थोड़ा ब्रश करके आता हूँ. रुक जा. खराब कैसे कर, थेरेपी सेशन खराब कर रहा है क्या? बहुत डीप Sorry, क्वेश्चन पूछ लूंगा नहीं तो। एमजे वुड यू सक 10 dicks one time or one dick 10 time? नो भाई I अब can't. अब तू वो आंसर दे जो मैंने तेरे को सिखाया था, चल। कौन सा? नहीं मुझे नहीं याद है कोई आंसर। मैं खुद ही दे देता हूँ यार क्वेश्चन का। तो गाइस देख, तुम लोग को बहुत डीपली समझा रहा हूँ। इफ यू सक 10 dicks one time, यू आर बेसिकली अ रंडी। तो अगर इफ यू विल सक वन डिक 10 टाइम्स, ठीक है, उस बंदे से तुम्हारा कनेक्शन बिल्ड होगा एंड ही विल बी लाइक क्या सक, क्या मतलब वो प्राइस वगैरह पैसे वैसे भी दे दे, यू
Continue. You can make a connection, bro. Like Sorry, you might भैया, even like sucking dicks. You don't know. आजकल पता नहीं होता unless you try. I know, right? Yeah. वैसे एमजे बोल रहा था ना हर एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ। MJ, do you want to try like MJ? Have you ever thought मेरे like को पूछा था। switching genders and shit? Switching genders? Nah, never. What are your thoughts about anime girls? Anime girls, bro, smash next. अच्छा. Ayush, What if what are your kinks like? You can share. You can share few kinks, right? Sure. Yeah, bro. Go ahead. Uh, let's start with Hmm. lollies, okay? Hmm. Oh, actually, no, the video later over here, or no? Yeah. Wait. Let's backtrack, okay? Let's ignore what I just said. Hmm. I meant gothic girls, okay? Gothic Uh, girls, yeah. Gothic yeah. girls are for broken people. Like Yes, I can जिनकी fix soul, her. हाँ, I can fix. I can fix her. I can fix her. Man cannot fix himself. Fix her. I cannot fix myself. I can fix her. I can fix her. Yeah. मैंने That like is I just remembered previous, हम no? लोग की conversation चल रही थी आयुष, ठीक है? तो उस time पे you were like I'm into necrophilia. Yeah, I am. So like you told me you watched like some necrophilic porn and shit, and you're like I want to do. do this. I don't want to do it, but I like it. मतलब like what are the feelings, emotions, sensations you get after watching? That's the whole point. There are no feeling emotions in necrophilia. That is what I like. Just a fucking piece of shit dead body there. Well, how do you feel after watching उस type का content, you know, Ayush? It's kind of cool. What can I say? Like, अबे कुछ डीप बातें करो ना साला, तुमसे तो होना नहीं, मैं ही पूछे जा रहा हूँ। कब तक करूँगा मैं नहीं, इंटरव्यू? अच्छा सवाल। अरे ये वो वाला शो बना दे तू। कॉफी विद कॉफी विद करीमी। कॉफी विद करीमी। सारे नाम कैसे ले रहा? मैंने बोला मोहिते। कॉफी विद करीमी। भाई creamy? और अच्छे Yes, क्वेश्चन तो तू क्वेश्चंस पूछता रहेगा, हम गेस्ट है, ठीक है? Would you आज rather? तेरा नया गेस्ट रहेगा। एंजे लाइक आफ्टर लाइक जब से वेनो गया है, हाउ डू यू फील नाउडेज? लाइक It's- डू यू फील द एम्प्टीनेस वेनो लेफ्ट, लाइक वॉइड इन योर बॉडी, लाइक तेरी सोल में जो छेद करके गया एमजे, बहुत वेनो बहुत बड़ा एमजे उसको एस्ट्रोस Bro. बोलते हैं। ब्रो। क्या? यू कैन लाइक गो ऑल आउट, यू कैन लाइक वी आर हियर फॉर यू, you have a shoulder to cry on एमजे, you can go all out. Yeah, I feel very sad. But like वो आता है भाई मेरे सपनों में रोज. बट लाइक तुम लोग क्या कर रहे हो अब वेनो के लिए, लाइक वेनो के जाने के बाद उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए, लाइक व्हाट आर यू गाइस डूइंग? I am planning to go to Australia. Yeah. अबे ये साढ़े पहले झारखंड में साढ़े झारखंडी पत्ते तो पहन ले पहले सही से। मैंने बोला तूने तो शरीर में बम चिपका रखे हैं. भाई इसने 3 दिन में सोच लिया कुछ रिप्लाई। 3 दिन इसने लगातार रोस्ट होने के बाद पत्तों के बारे में इसने सोचा मैं भी बोल देता हूँ बम को ले। भाई तू बताने दे यार, तू बताने दे उसको भाई, बताए मुझे लाइक हाउ डू यू फील एक्चुअली, लाइक Actually, like for real. Yeah, it's sad. Honestly. देयर इज दिस एम्प्टीनेस ना, राइट? वेनो वाज लाइक वेनो ने हम लोग को He शीकी was से the- कनेक्ट कर रखा था। वो गैप्स ब्रिज करता है वही basically. ही वाज लाइक ये बेंच चूतिया बंदा, इससे दोस्ती करवा दूंगा पर मैं इस अच्छे बंदे की, तो ताकि इस अच्छे बंदे का मेंटल डैमेज हो जाए। वही This is Venu, guys. By the way, I used like, how are you feeling? Like MJ शीकी से बात नहीं हुई है 3-4 हफ्तों से। How are you feeling, guys? to be honest I feel very refreshed, you know. Yeah, I know. Like I can क्या बोलूं, understand. मतलब I I know where don't you're need to hear unnecessary comments again and again. stream कर दे। हाँ, सही। वो तो फिर भी ठीक है at times, but सब बार-बार बात करो बीच में। भाई शांति से बैठने दो। Yeah, actually. I know तू वो पॉइंट लेके आ सकता है कि भाई तू वीसी में है तो तू शांति से क्यों बैठा रहेगा। वही अबे तो but बैचो थोड़ी ना हर सेकंड बात करते रहूंगा। like you can mute the person too, but it's fine if you don't like the company of him as well. Like Yeah, at you the don't end like of the that. day, शीके यार। ठीक ही है यार। Like अभी जैसे वेनो गया है, वो सर्वर काफी एक्टिव था, you guys know, है ना? हम लोग वेनो पे डिस्कशन कर रहे हैं आज, ठीक है? Yep. वो सर्वर गया वो वेनो गया, वो सर्वर वाज लाइक बहुत एक्टिव, ठीक है गाइस? Actually, like you guys fought कि भाई मैं ओनर हूँ, माधव हाँ। बोलता मैं ओनर हूँ, but हाँ। actual ओनर तो कोई और था. भाई देखो. ओनर दिलों में था ना वो बंदा, लाइक वो he owns Yep. our He owned heart and everyone. shit. Yes. Yeah. We were तो slaves. like guys listen, तो वो गया, ठीक? Yep.
मैं भूल गया यार, तुमने बेंच तो एक्टिव स्टाफ दैट सर्वर इज ऑलमोस्ट लाइक डेड, ठीक है? Yeah, it तो is dead. लाइक हाउ डू यू फील, लाइक हम लोगों के 2-2.5 साल तो एटलीस्ट साथ में हम लोग के 2-2.5 साल उधर निकले हैं, मैं तुम लोग को तो बाद में मिला था, Right. है ना? तो हाउ So डू यू I'll फील be लाइक very दैट सर्वर विल डाई सून इनफ, लाइक बंदे विल स्टार्ट लीविंग एंड शिट, probably they'll leave, how do you See, feel? I'll be very honest with you. I don't really care about that server, even though there is like 2.5 years of whatever memories and shit. Yeah. Like I don't care if people don't come there, as long as I'm in the server and that server still exists, and I can refer back to those memories. That's all I care about. भाई तू तो Obviously, सीरियस I don't care that server revives or not. I don't really give a shit, my dude. I just want Veno to come back. That's all. ब्रो, पता है मेरे को लाइक यूजुअली व्हाट आई ड्रीम ऑफ, एक दिन मैं सुबह सो के उठाऊं एंड व्हेन वीसी में बैठा गाइस, Yep. That is the biggest dream that we have. yeah, that is the like double dream, but like That he's waiting, life inviting, goes and on and tagging us to come. या चलो गाइस वैलो खेलते हैं, चलो गाइस। अच्छा क्या खेलना है तुम लोग बोलो, मैं तो खेलने के लिए रेडी हूँ गाइस। हाँ, पैंट तू उतार, बता। अरे नहीं तू बता। पैंट उतारनी उतारूंगा भाई, तू बोल दे भाई बस। आई एम वेनो गाइस। अरे यार शीकी बुरा मान, अबे शीकी बुरा मान जाएगा। प्रो लाइक दैट ओनली। 3 बंदे यार इंटरेस्टेड टू प्ले वैलोरेंट, the fourth guy is like bro CS खेलते हैं bro, इसके लिए थोड़ा बुरा लगेगा यार, थोड़ा एपेक्स खेल लेते हैं, आ जाओ 3-2 करते हैं, 2-2 Bro बंदे। was like सबका good He bro. was Bro is like yeah, bro got no enemies actually. actually my man is fucking Thorfinn bro, there is nothing else to say. Yes. अभी क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन ढूंढो यार, मेरे से नहीं हो रहा। Question, let's see. You can. I will ask the host now. Yes, thank you. So Mr. Karimi, sorry Hamad. Yes, sir. Okay, so explain the laws of physics. नहीं क्या उतरा? गलती से वो explain आ गया ना, मुझे question papers की याद आने लगी। कोई बात नहीं। So okay, tell me what you feel about that particular server in general. भाई देखो, मेरे ओपिनियन बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो सकते हैं। I don't care. I Go don't ahead. care, so I'll just go out. This is a therapy session. I don't like Deku, I don't like Shiki, I don't like the I'm coming Okay. out honest, ठीक है? I don't like the Surprising. company, they are fucking dumb ass. बेकार की आर्ग्यूमेंट होती है मेरी, बेकार में मैं somehow मैनेज कर रहा था because when I was there, you was there, बट अब मेरे को नहीं करना मैनेज, आई एम आउट। बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स फाइन, लाइक कोई वीसी ज्वाइन करता है और फिर थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो, लड़ाई वड़ाई Yeah. झगड़ा वगड़ा मेरे को तो Fair, आदत fair. हो गई थी। लाइक डेकू ज्वाइन करना है तो उसको माँ की गाली देनी है, डेविल आएगा तो कुछ बकचोदी उसकी टांग वांग खींचनी है, एलियम बोलना है उसको, यू नो, शी आएगा तो म्यूट Yep, कर देना है या किक कर देना है सीधा। मेरे को मतलब Yep. दैट वाज पार्ट ऑफ माई लाइफ। बट अब यू नो, अब मैं 2-3 हफ्ते से बहुत कम एक्टिव हूँ डिस्कॉर्ड पे, खुद ही यू कैन सी। बट अब मेरा मन नहीं कर रहा, यू नो, कहीं पे बैठने का, कुछ खेलने का। आज मैंने थोड़ा बहुत वाला खेला भी है, वरना मैं खेल भी नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। Yep, सो yep. इट इज़ लाइक दैट। Understandable. MJ, what would you like to say on this? MJ भी Veno 2.0 light, we going to be in every good book. हाँ MJ बोलना। MJ, to be very honest, like I haven't seen you a lot in like anybody's group as such. So, like, what is your scene in the particular server? Like, even though I have known you for so many years, it has never been like how I connected with Kira within just this 1 or 2 years. हमारा हुआ होगा at least 4 साल में. So you take things relatively very slow, and you don't like to you don't like a lot of company, I guess. But what is your take on that server and just generally like what kind of like who are the people that you would like to hang out with, not hang out with? Yes. What are your just opinions? be open about it, huh? No one is listening to this. Yeah, zero watching. I can see that. I'm watching. Hello, चुप रहे, I'm watching. तू ना देख। Wait, let me go through that सब. किससे मेरे को प्रॉब्लम है? नहीं actually you Like can not come out. just generally problem or like, Like who you like, ऐसे but like there need, what is your scene? you for don't need to taking like sit with in him. अगर वो आ general, गया like- you leave alone, ऐसे नहीं बैठना उसके साथ, कोई हो बीच में तो it is fine, समझ रहा है? Because I still feel that you know like तू सबसे दोस्त नहीं बनना चाहता just generally, like you just fine with just coming, talking, going, but you don't have that connectivity with people. I don't know why. Like even I just straight up have few people that I stay connected to. The rest all I don't give a shit about. But you are sort of in between again. But you're not like Veno also again. Veno is like connected to every single one, and he Yeah. maintains that
rapport with every Like, single Yes, person. yes, yes. वो सब मेरे से नहीं होता है। मैं I'm Yeah, like straight. I can be like nice if I know you. बट इट्स yeah, नॉट लाइक कि exactly. मैं तेरे लिए जान दे दूंगा अगर मैं तेरे को जानता हूँ तो समझ रहा है। अब इफ इट्स वेनो आई विल आस्क मी कि मेरे को 15-20 हज़ार चाहिए, लाइक 1 लाख भी चाहिए तो आई समाउ अरेंज, ठीक है। बट हाँ, इफ इट्स लाइक पीपो क्लैप आई विल थिंक लाइक बहुत देर तक कि दूँ नहीं दूँ, समझ रहा है। लेकिन एक एक पॉइंट पे आई विल इवन गिव पीपो क्लैप, ठीक है। बट अगर yeah, इट्स डेकू डेविल ये सब तो मेरा बिल्कुल सीधा नो रहेगा, मैं सोचूंगा भी नहीं, समझ रहा है, क्योंकि मेरा yep, कनेक्शन ही नहीं है उनसे सीधा सीधा। जस्ट टेलिंग यू कि कोई डिस्ट्रेस में आता है, कोई प्रॉब्लम में आता है कि किसको हेल्प कर दूंगा मैं। हम लाइक आई लाइक मैं एडजस्ट करके समाओ अपने आप को लाइक शॉर्ट करके, अगर मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे समाओ अरेंज करके आई गिव हिम, समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मुझे। हम्म। yeah. बट But तेरा system अभी तक थोड़ा समझ नहीं आया है. Like even though I have known you for so long, I think Veno and I have known you for the longest over here. So I'm pretty sure उसको भी नहीं exactly पता तू किस किस के साथ hang out करना पसंद करता है. Like what is your general taste? And like मेरा मेरा एमजे explain. से इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, बट इट्स लाइक डिसेंट डिसेंट वन। हाँ wait, like no, the thing is हमारा connection है, but like he, I don't know, we can't really tell हमारा connection इसके साथ है क्या. वही वही Like रिसेंट वैसे type का बंदा है. Like I feel like I am close to him, इन but I रिसेंट don't know टाइम्स। whether he हाँ, thinks that I am close to him or he is close to me. Like यस। I have no idea what this guy thinks. लाइक एक्चुअली एमजे का यही लगता है मुझे। अभी थोड़े रिसेंट टाइम में हम लोग ज़्यादा बात करें तो इट फील्स लाइक बेटर, पहले हम लोग इतनी बात नहीं करते। आई यूज टू काउंट हिम एज आई यूज टू काउंट हिम विद शीकी। Yeah, मी I can, मी पर्सनली, मुझे पता चलता था वो। वही मी पर्सनली आई वाज लाइक फक दिस गाय ब्रो, शीकी के साथ ये बैठा रहता है। I mean, for me, from the beginning, I know that like he was a chill guy. He's not definitely like Shiki, like very different actually. बाद में आई वाज लाइक फाइन, आई एम But फाइन विद, मैंने वेनो को डीएम में yeah, बोला था आई एम फाइन विद एमजे, बट दिस शीकी गाइस फकिंग डम एज, कहां से लिया है इसको। yeah, that's there. So I don't really understand. Like, explain your stance, MJ. मेरे को ऑनेस्टली किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मैं There we go. लाइक या मैं किसी के साथ भी लाइक चिल कर लूंगा, ऐसा टाइप। So, बट would you like अगर me to ऐसे like further your friendship with anybody like that? I don't feel like you ever want to like increase your friendship with anyone. मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को फ्रेंडशिप रखना है किसी के साथ ऐसा एकदम। आई मीन लाइक क्या बोल रहा हूँ मैं। अबे बोलना। अह, देख देख मैं इसका बताता हूँ थोड़ा थोड़ा जितना मुझे अभी तक समझ में आया। इसने मेरे को बोला था इसकी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, डिस्कॉर्ड की अलग, रियल लाइफ की बिल्कुल अलग, हाँ, तो fair. है ना, है ना। अभी अभी थोड़ा बहुत अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो रियल से रिलेट है। हाँ तो बता बता। तो मतलब लाइक आई एम हैप्पी राइट नाउ जितने दोस्त हैं अभी मेरे। मेरे को मेरे को कुछ ऐसे बनाना नहीं है, नहीं मेरे को किसी से ऐसे तोड़ना है मेरे को भी समझ कि मैं गया, उसकी लाइफ से वैनिश हो जाऊँ। वही वही समझ गया मैं Fair. कि ये लाइक कल शी की दोस्त आज शी की इज अननोन। हाँ Yeah, वैसे okay, that part नहीं is कर understandable. Like you don't want to break off any connections. That is okay. But ये what about improving your connections? How do you decide कि भाई बंदा अच्छा है, इस इसके बंदे के साथ चिल साथ मेरे करने को जा सकता हूँ। हाँ, like how do you decide that? आई डोंट डिसाइड एट ऑल। ही जस्ट लाइक फील लाइक इट एंड ही गोस, आई थिंक इसका ऐसा सिस्टम है। Because you know आज तक मुझे लगता है कि I know you like you're very good friends with GT and shit. या मुझे आज तक लगता है कि has he spent more time with you than I have or has he known you for longer? वो लाइक उसने तो ऑब्वियसली ज़्यादा लाइक पहले से जानता है मेरे को, क्योंकि जब मैं अच्छा, बीजीएमआई खेल रहा था उस टाइम से है वो, और जब मैं बीजीएमआई लाइक ऑलमोस्ट स्टार्ट ही किया था तब से है वो। okay. Then it kind of makes sense also. But I still feel that you know I'm not even close to wherever you are with GT. Like वैसे लगता है मुझे like because I don't understand you. मैंने इसकी और जीटी की कभी कॉन्वो नहीं देखी, या क्योंकि मैं एक तो बट कभी जीटी किसी वाज को अ चिल DM पर्सन। नहीं करता. मेरे से 2-3 बार वो मिला था, ही वाज लाइक वेरी चिल। मैं भी GT से बोला हूँ, he's really nice. हाँ वो बहुत मतलब उसका मेरा ऐसा लग रहा था हम लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को आफ्टर टॉकिंग। हाँ, वो अच्छा बंदा है. Like if you call him to Valo, he'll probably come now. Also, हाँ I'm क्योंकि not उसका even ह्यूमर भी kidding. मैच कर रहा था बहुत ज़्यादा। वही. He's a nice guy. He's generally very chill. एक like, एक yeah, इसका chill. कोई दोस्त था वो छूट गया था, पता नहीं कौन था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। भाई उसकी याद मत दिला. वो जो भी भाई बोल याद बंदा. दिला कौन? नाम मुझे नहीं याद आ रहा मुझे, आया था वो उसके बाद उसको किक ही कर दिया था मैंने थोड़े टाइम बाद सर्वर ओह से। सूरज हाँ वही ड्रैकुला गेमिंग। वही अरे वो वही खटमल है भाई, एक नंबर। तो वो लेके क्यों आया था? अरे उसे वैलो खेलना था, उसमें दोस्त नहीं है।
हाँ, वेलो तूने कहा खेलते आजा थे मेरे दोस्त है मैं खिलवा देता हूँ हम आजा। सब वेलो खेलते इधर आ जा। अरे अरे रुक, माय फ्रेंड्स आर थोड़ा मेंटली स्टेबल, तू मेंटली अनस्टेबल है, आ जा भाई तेरे अरे आजा, एक है ही ऑलरेडी हमारे पास। भाई ऐसा है। एक्चुअली वी आर कमिंग आउट, हम लोग थेरेपी सेशन कर रहे हैं भाई। और रियल इट्स pretty good though. I'm watching the Minecraft stream also, ऊपर से मेरे मैं को बहुत मैं मतलब मैं भी सूदिंग वही लग देख, रहा है भाई। वही यही देख मैं रहा हूँ, मैं वही मैं देख। देख के वही बस बोले जा रहा हूँ, बोले सो जा रहा लाइक एमजे व्हाट इज योर टेक ऑन लाइफ अभी आगे, व्हाट आर यू थिंकिंग, लाइक कैसे करेगा तू? विल यू लाइक हूँ यार। कीप डिस्कॉर्ड पार्ट ऑफ योर लाइफ, और यू विल लाइक थोड़े टाइम बाद यू विल बी लाइक जैसा तुझे लगता है एक्चुअली ऐसे? नहीं मेरा लाइक रहेगा डिस्कॉर्ड, पार्ट डिस्कॉर्ड ऑफ विल बी देयर डिस्कॉर्ड विल बी देयर even if you are इवन द not coming online, like you will at least message us shit with इंस्टा वगैरह पे कनेक्टेड रहेंगे ही। वही वो नहीं स्कूल के बाद भी यही चेंज। बोला था मैंने। जस्ट टेलिंग यू, क्या क्या? स्कूल के बाद भी मैंने यही बोला था, विल स्टे कनेक्टेड एंड शिट। मैं actually अच्छा surprisingly I have only one group from school that I care about and I'm still kind of connected with them. मतलब इतना तो होता है बात, It's बट rare. नहीं, वेरी actually मेरे लिए बहुत मुश्किल है because like I don't message anyone, I don't call anyone. No, I don't even call my family. Like they itself are like what the fuck bro, why don't you call me and shit. I'm like मैं क्या करूं भाई, मैं भूल गया, मुझे याद भी नहीं होता. वही Like मेरा भी सिस्टम I'm यही a very है। secluded person. I'm मैंने with my मैंने so I क्या think क्या व्हाट हैपेंड विद मी, दे यूज्ड टू कॉल मी, ठीक है, अभी थोड़े टाइम बाद स्कूल के बाद, बट आई वाज हाँ लाइक फक इट ब्रो, अभी इग्नोर करता हूँ, कल बात करूंगा, कल बात करूंगा, कल बात करूंगा, कल बात करूंगा, अब नो वन कॉल्स मी ब्रो। yeah, makes sense. It's somewhat similar to me. But the fact that like at least you get called, nah, I don't. Because I don't know, I was good friends with some people and those people still message, okay? Those are I'm talking about like 3 people. हाँ मेरा 3 भी or 4 सेम है, people 3-4 people। that that will message me if they ever like have off time or like from school days that is. And if for example I have 2 friends that have are not exactly in Bangalore anymore. So one guy is abroad and the other guy is in a different state. So whenever they do come to Bangalore, they instantly drop me a message saying that bro, I'm in Bangalore, do you want to meet and stuff? And that's something that I enjoy actually. But अच्छा yeah, there are some people that if they message me also I wouldn't really bother, like भाई तू आया है तो मैं क्या करूँ. आई अंडरस्टैंड मेरे साथ होता है। अभी आजकल क्या कर रहा हूँ मैं, अभी कल परसों मेरे दोस्त आए थे, ठीक है, दिल्ली, दे आर लाइक फ्रॉम नीचे से आए थे, साउथ की स्टेट से, दे आर कोई पुणे है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, ठीक है, कॉलेज के लिए। तो दे केम और फिर मैंने कहा था मैं आ जाऊँगा, ठीक है, लाइक गुड फ्रेंड्स जो थे मेरे। बट व्हाट हैपेंड, Yeah. मैं पूरी रात सोया नहीं था ट्यूसडे वाले दिन। आई वॉज लाइक स्लीप शेड्यूल कल फिक्स कर लूँगा, मुझे याद नहीं था वेडनेसडे को मुझे मिलने जाना है। और मैं सुबह उठा तो उसका फ़ोन आया, कहता आधे घंटे में हम लोग यहाँ सीपी पहुँच जाएंगे, मेरे घर से दूर नहीं है सीपी। तो मैंने कहा तुम आ जाओ। cerebral palsy. हाँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओगे तो जस्ट कॉल मी, आई विल कम देयर। तो सीबी में थोड़े बहुत कैफेज वगैरह हैं, ठीक है, तो मैंने कहा आई विल जस्ट कम देयर। तो फिर मैंने एक वीडियो लगाई यूट्यूब पे कि व्हाट इज़ बाइबल, और मैं फिर टेबल पे ही सो गया। वाह. तो वीडियो वाज इतनी बोरिंग। और फिर जब मैं उठा तो मेरे फ़ोन पे 28 से 30 मिस कॉल थी। आई फेल्ट सो बैड भाई, इतने टाइम बाद आई फेल्ट For सो बैड, एक्चुअली सो बैड। हाँ Yeah. मतलब गिल्ट फीलिंग होता ही है, वही। like even though you might not be like very connected, like compared to some of the best connections that you have, they might not be in the same level. क्योंकि मैं But 2 घंटे बाद जब उठा। वो actually message करके like you feel like they wanted to talk to you, like you feel wanted ना, तो वो अच्छा feeling होता है. एक दो मिस And कॉल then when you तो actually इट वाज break बी it, फाइन। 30-40 मिस हाँ, कॉल थी, लेजिट आई भाई, फेल्ट सो they बैड। like genuinely wanted you to be there. और फिर So, मैंने yeah. फिर आई कॉल्ड देम बैक एंड दे वर लाइक हाँ. कि क्या बोलते हैं आप आ जा, बट मेरी हिम्मत ही नहीं होती, सर दर्द होने लगा था मेरे, फिर मैं गया ही नहीं। अच्छा, अभी मैं 3 दिन रोज सॉरी बोल रहा हूँ उन लोग को, एक एक करके कॉल करके थोड़े दिन से। understandable है, but are they still in Delhi though? नहीं चले गए वो लोग। अब मैंने बोला मैं आ जाऊँगा, हाँ. उधर की तरफ आऊँगा तो आई विल मीट यू। एक दो तो यहीं से आए थे यूपी से, बाकी एक तो नीचे से आए थे, 4 बंदे थे टोटल। But still not Say- from the same state only, that's a big thing. कौन आया? सही है। हेलो सेन, वी आर हैविंग अ थेरेपी सेशन We're having therapy sessions, yes. About what? अबाउट लाइफ। Life. So tell me, Sayan, would you suck 10 Yeah, dicks one guys. time or one dick Nah, 10 times? nah. Don't. What So happened? say and explain what is your relationship with the masala dosa. Masala dosa, it's like on and off relationship. Sometimes I like it, sometimes I don't. Fair. Which is your favorite dosa? Masala dosa, Mysore masala dosa. Bro, I- how this conversation went Sorry, from my bad. school friends to dosa? I don't know. I just I Sayan, we're I live on forgot. YouTube, by the way.
Yeah, we are live. On YouTube. Yeah, we're doing Yeah. a live YouTube. Live some random ass channel. Don't question. 2.5k subscribers, bro. No one is Bro. watching. Like I am really interested to know कि तूने क्या बोला कॉल करके उन्हें किसको कि मैंने क्यों बोला भाई सॉरी, मैंने सीधा बोल दिया लाइक मैं पूरी रात नहीं सोया था। वो दोस्त है यार, ऑब्वियसली पूरे 10-12 साल थे मेरे साथ स्कूल में, जानता है वो मुझे। And then, yeah, okay. क्या बोला? हाँ तो फिर वो बोला कि सोया नहीं सोया, गांड मरा अभी आ जा, फिर मैं जा नहीं पाया। Damn, were they upset though? Like, were they like angry or upset or what were they? साउंड तो डाउन, मतलब ऐसे कर रहे थे कि दे ट्राइड बट मैं गया नहीं, यू नो। और ये पहली बार नहीं था, आई टोल्ड यू ना, लाइक मैं कॉल्स वगैरह नहीं उठा रहा था बीच में, दे वर स्टिल कॉलिंग। और फिर अभी मैंने कल परसों स्टोरी लगाई तो वो बोलता है, मतलब सरकास्टिकली, हो गई तबीयत सही, हो गई नींद पूरी। Oh, okay, okay. Yeah, so he was kind of pissed off, हाँ obviously, makes sense. अबे ऑब्वियसली 30-40 में But like, how many people were there? 4 ना 4 Four. एक्सक्लूडिंग So मी। they, like, were you like an important part of this group? या एक्चुअली या Okay, that makes sense, yeah. मैं व्हाट हैपेंड वाज, इट वाज लाइक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हम लोग की स्कूल में। Yeah. ऊपर से फिर लाइक 11th में क्या हुआ था, वी जो बंदे फेल हो गए थे, इसमें जो ग्रुप में बंदे बचे थे जो फेल हो गए थे, लाइक 2-3, और मेरा पुराना वाला ग्रुप चेंज हो गया था, लाइक आई न्यू दीज गाइज पहले से, बट लाइक फिर यू नो अब रिपीट कर रहा था तो आई वाज लाइक कंफर्टेबल विद देम ओनली, क्योंकि ये पिछले साल भी थे और उससे पहले भी थे, आई न्यू देम। तो मेरा ग्रुप जब चेंज हुआ ना, तो मेरी अगर कितनी बार भी लड़ाई हुई थी, दे वर लाइक स्टैंडिंग बाय मी, यू नो। मैंने पूरे 10-12 साल अपने स्कूल में बहुत कम लड़ाई लड़ी, लेकिन जितनी मेरी 11th में सिर्फ लड़ाई हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा ही थी। आई वाज लाइक आई वेंट रोग, मैं किसी को भी मार देता जाके। Yeah. हाँ तो फिर देवर देर लाइक कोई बाहर स्कूल के बाद अगर बाहर लड़ाई होती थी तो दे लेफ्ट, लाइक वो ट्रेन से जाते थे घर, मेट्रो से आई मीन, तो दे रुक जाते थे वो लाइक मेरे लिए, और उनको 2 घंटे लगते थे, दूर से आते थे काफ़ी वो लोग। Interesting. तो इट वाज वेरी नाइस, यू नो, रिलेशन वाज नाइस। ऊपर से फिर हम लोग क्लास बंक वंक करके कैंटीन जाके चाय वगैरह पी रहे होते थे, तो इट वाज वेरी वेरी बहुत अच्छा था मेरी स्कूल लाइफ। They पहले were मुझे those kind of people. हाँ मेरी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी जब मुझे नहीं लगती थी उस टाइम पे, आई यूज्ड टू लाइक स्टे Yeah, एब्सेंट एंड शिट। अभी मेरे को आई जस्ट Miss it. मिस इट एक्चुअली। कल परसों Yeah, मैं yeah, Apple it के- happened to me हाँ, also when I thought my school life was shit. हम्म। अभी मैं कल परसों जा रहा था, मेरा स्कूल लाइक इट्स इन सीपी ना, ठीक है, सीपी के बिल्कुल 2 मिनट पहले, यू जस्ट नीड टू क्रॉस अ ब्रिज। सो आई वाज गोइंग टू एप्पल का सर्विस सेंटर, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो आई जस्ट सॉ माई स्कूल एंड फिर मेरे को एकदम याद आ गया सब दोबारा। It was Damn, fucking- yeah, that's वही always the nostalgia when it Yes. hits, it hits hard. वही आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो। फिर मेरा और मन था कि Well- मैं भी मिला हूँ, फिर उनका कॉल भी आ गया था लाइक, फिर बट मैं जा भी नहीं पाया, फिर ऊपर से इतने कॉल्स देख के आई वाज लाइक फकिंग क्या किया मैंने। क्या ही कर सकते हैं अभी। वही। नहीं मतलब जा सकते थे, मतलब like you still had the chance or they left. ना आई हैड द चांस बट मेरे नहीं हो रहा था मेरे से जाने का, मैं सोया ही नहीं था। Okay, it was just okay. मेरी बॉडी में भी पेन होने लग गया था, फिर आई वाज लाइक रात को सोऊंगा फिर कल जाऊंगा, देखता हूँ। अब आई थॉट कि मैं हाँ। 2 बंदों से जाके इधर ही मिल लूंगा, दे आर लाइक इन यूपी समवेयर, एक दिन जाके आई कैन हाँ, मीट देम, understand. यू क्लोज लाइक इधर ही है गाजियाबाद साइड की तरफ कहीं, सो इट्स हाँ। वेरी क्लोज लाइक 30 किलोमीटर्स, सो आई कैन गो देयर। बट जो 2 बंदे थे उनसे नहीं मिल पाऊंगा, आई विल मीट देम समडे, हो ही जाएगा वो। Okay. कहाँ आएंगे तो सही, एक चंडीगढ़ था और एक नीचे पुणे था, तो दिल कम। हमारी बातें ज़्यादा हो गई है लगता है। आज let's talk about EMJ now because MJ explain bro. तू अभी 12th में है ना? ना कॉलेज में आ गया, वो बीबी नहीं, कर रहा। sorry 12th खत्म है ना तेरा? क्या रिलेशन है 4 साल का बैच। अबे तो मैं थोड़ी ना याद रखता हूँ कौन कितने साल का। मजाक कर रहा। एक तो हमारे इतने अलग-अलग दोस्त होते हैं। Like we don't give a shit about age. That's the best thing I like एक about 12 this साल college. का है, एक 14 साल का है। कोई फर्क नहीं पड़ता। If you have maturity, if you know how to talk, how to have conversations, then cool. Be like Sam. अबे चुप हो जा। That's simple. Sam is So like, there are two extremities. sometimes There I is feel one like who's Sam is more who's mature than me. over mature. Yes. Yeah, he's over mature for his age, and then there is Shiki who is like under mature. premature. Like man doesn't know when to say what. Man is literally budget XQC. अरे एक तो बंदे को क्या होता है, शॉट लेने, बस रैंडम बंदा इसी में शॉट ले लेता हूँ इस पे। Yep. I mean, was like obviously that has gone down a lot because you know we have the power to kick him out. That's a different thing. वही वरना वो But बहुत उसको बोलना ही है कभी हाँ वो मेरे पे बीच में शॉट ले लेता है, वो लाइक मेरे से क्यों बकचोदी कर रहा है ये, इसको पता है जबकि मैं वही। किक कर दूंगा इसको।
तब भी मुझे like लगता था it's not like pure humor type also, like वो जब हम एक दूसरे को टॉन्ट बोलते हैं it टाइप is हाँ laughable, like you can laugh it ब्रो off and इज we'll just be like टॉन्टिंग अस bro what the fuck एक्चुअली bro. He is like actually like you know like गाली दे रहा है literal. हाँ वही उसका टोन और टॉन्ट वो एकदम ऐसे टॉन्ट हाँ लगता है इट साउंड लाइक टॉन्ट yeah, तो एक तरीका होता है उसका बोलने का. yeah but it's fine Sen what we were doing last night on that server did he left Nothing. oh No one left. that guy took We my are just 100 bored. rupees bro I know. Why did you send him, bro? What the fuck is wrong with bro you? he asked he said send or gay and I go you can get the proof Oh damn, oh damn. Okay, bro. Send 10k or you're gay. fuck off I'm gay Oh, he turned gay. 10k is different 10k bro is all your worth. yeah Okay, bro. 10k is all my wealth 10k is all it takes to make him suck a dick. yeah I can suck 10 dicks 10 times Damn, whore. that's why I told you MJ कि 10 dicks 10 time मत suck कर एक dick 10 time suck कर ले no one will call you a whore maximum they can call you like gay Yep, I like how it revolved everywhere and then came back to sucking dicks. भाई it is nice MJ बताओ भाई अपना कुछ life के बारे में Yeah, we haven't, like, I honestly don't know anything about your IRL shit. मैं बताता हूँ अपनी you know like मैं I know some parts of yours. हाँ मैं बताता हूँ बहुत अच्छी अपनी लाइफ स्टोरी देयर वाज अ गाय ठीक है आई वाज इन सेकंड नहीं आई वाज इन थर्ड ठीक है तो देयर वाज अ गाय वो कुछ तो लेके आया था क्रैक्स लाया था क्रैक्स इट वाज क्रैक्स ठीक है तो Oh, he okay. हाँ उसमें से टॉय निकला एंड ही वाज डूइंग समथिंग मैंने वो टॉय लेके अपने हाथ से आई वाज उसके गले में लेके और घुसा दिया पंच मार के Wait, what? हाँ सुनता तो Yes, I can't picture this right now. What did you do? You took the toy from him and then you just grabbed his neck. हाँ मैंने उसको पीछे punched से him. पकड़ा और मैंने वो लेके उसके मुंह के अंदर डाल दिया टॉय लाइक Okay. प्रेशर Okay. सो आई वो बंदा बकचोदी कर रहा था लाइक आई वाज छोटा तो फिर उसके बाद मैं आया घर फिर मैंने समहाउ लाइक मैंने रोना धोना किया मैंने अगले दिन छुट्टी मार ली ठीक है हाँ. मैं आराम से हैप्पी कि कुछ नहीं होगा अब 9 या तो 10 बजे स्कूल से कॉल आया हाँ. कि यहाँ पे आपके बच्चे ने किसी के ये कर दिया वो कर दिया एक स्कूल आओ और यूँ है फिर मेरे को स्कूल लेके गए मेरे घर वाले उसके पेरेंट्स आए हुए बोलते इसकी गांड में से खून निकला है क्या? Wait, what? वापस. इसकी गांड से खून निकला है तुम्हारे लंडे ने पता नहीं क्या आई वाज लाइक व्हाट उस लड़के ने फिर मेरे से लाइफ टाइम कभी बात नहीं की थी और वो 12th तक था स्कूल में Wait, like, was this just a metaphorical expression or are you literally? no telling me they that? literally said like he got blood in his body In his in his Body? potty potty? yeah Oh, what? my parents were Dude, like I'm so what the fuck तो फिर बहुत ज़्यादा टीचर वाज लाइक कि छोटे बच्चे ही हैं हो जाता है ये वो somehow they resolved क्या? they हो resolved जाता somehow है? What do you mean हो जाता अबे है? अब वो बंदा तो और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा कह रहा इसने मेरे मुंह में ऐसे हाथ डाला और पंच मारे मैंने कहा भाई इतना थोड़ी किया था मुंह में हाथ डाला भाई क्या बोल रहे अबे तो मैंने वो लेके उसके अंदर डाल दिया था गले के हाँ तो वो understandable but like exaggerate कर रहे हो बहुत ज़्यादा. हाँ वो और ज़्यादा And एग्जैजरेट how did the story get to this fact that मतलब वो potty अबे तो blood दोस पेरेंट्स वर लाइक बहुत ज़्यादा अजीब वो मेरे पेरेंट्स से हाँ. लड़ने के लिए रेडी थे लाइक पुलिस केस कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे बट समहाउ टीचर Okay. मैनेज टू लाइक सेटल इट Interesting. आई गॉट सस्पेंडेड फॉर 8 days आई थिंक Oh, so you wait. So that brings me to the topic. MJ, have you ever been suspended? for a whole year what do you mean क्या? Wait, what? Hello? निका MJ? What the fuck are you talking about? bro I like बताया तो था like the meme What? thing the meme which I made that Nah. went Wait, viral in the whole I school. recall some meme shit that you told, but like हाँ. I don't remember it now. क्या किया था इसने मुझे आई डोंट इवन नो उस कुछ तो like, बोला था इसने meme हमने अपना बनाया था नाम भी उसका. रखा था MJ meme boy याद है हाँ हाँ हाँ, हाँ. हाँ हाँ यार नाम तो रखा था स्टोरी के बाद ही रखा था ये सैम ने रखा था ना एमजी मीम बॉय तो मैं हाँ. था नहीं उस टाइम पे जब when you did. I think मैंने थोड़ा सा सुना था. तो मुझे तेरे याद को नहीं एक साल का exactly. लाइक वो क्या हुआ है तेरे को इट्स काइंड ऑफ बैक लाइक फेल की तरह ही किया बैक नहीं किया like बोला कि सिर्फ एग्जाम देने आओगे हाँ तो फिर तो ये तो बढ़िया है Wait, तो हाँ नहीं, बढ़िया भी बता, था बता, बता. वापस बता. ये तो बढ़िया चीज़ है भाई थोड़ा सा like give a brief summary. You don't need to go like full deep into it. But क्या like, मीम क्या थी just प्रिंसिपल explain. टीचर के ऊपर थी क्या हाँ हाँ. टीचर की थी तो क्या हुआ था कि लाइक उस टाइम था कि मीम्स वगैरह चल रहे थे स्कूल में हाँ. काफी टीचर्स एंड यू आर उस टाइम स्टूडेंट टू मीम्स चलते हाँ वी नो तो चल रहे थे तो लाइक मैंने सोचा मैं भी बना दूं
लाइक उसमें क्या था, एक मेल टीचर था और हाँ, एक फीमेल टीचर थी, ठीक है। okay. लाइक द फीमेल टीचर वाज ऑलरेडी मैरिड, मेल बट टीचर वाज ट्राइंग. द मेल टीचर लाइक वाज Was रियली admitted. ट्राइंग, लाइक ऐसा Yeah. लगता था ना कि I know, we know. हाँ He's trying to Yeah, like flirt I with kind her. of हाँ, I know, समझ गया मैं. he's trying to hit that, you know. हाँ, या Yeah. एंड ऐसा लगता था देख के कि लाइक बोथ ऑफ देम लाइक डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, हाँ, किसी को लाइक ऐसा लगता था मैं देख के, और सबको लगता था, हाँ. ऐसा नहीं था सिर्फ मेरे को लगता था, ठीक है, हाँ, हाँ, But सबको you लगता था। decided to make a meme out of it. हाँ या आई डजंट मेक अ मीम आउट ऑफ इट। हाँ. Do you So do remember? you have like exact like quotings of what the meme said or like which picture you used like or if you have the entire meme itself, go ahead and show I that. don't have, I delete करवाया था उन्होंने, Uh, डिलीट करो, okay. डिलीट करो. मतलब फोन से डिलीट करवाया था। मीम कैसे बना रहे Okay. हो? So लाइक exactly meme में देख, था क्या? ड्रेक वाला मीम याद है हाँ जिसमें हाँ. लाइक in like the meme has two pictures, like हाँ, above and like बिलो. below, yeah, हाँ, इसमें Okay. ड्रेक एक एक में अप्रूव हाँ करता है, हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ. समझ. He says like no to one and then he approves the other one. हाँ, या. तो लाइक Yeah. Okay. लाइक मैंने क्या किया, जो मेल टीचर का फेस था वो हाँ. मैंने ड्रेक से स्वैप कर दिया, ठीक है, हाँ. Okay. Okay. एंड एंड लाइक ऑन द अबव आई पुट लाइक क्या बोलते हैं बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस, हाँ, ठीक और है, नीचे 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 मैंने उनका नीचे फोटो डाल दिया टीचर का, मेम को डाल दिया. मैम का डाल दिया. हाँ. एंड दैट वेंट And was there सुपर any वायरल। like was there any text to it or like ना did ना. people directly understand it or like या पीपल डायरेक्टली अंडरस्टैंड अरे क्योंकि हाँ, समझ गया हाँ, मैं. कि सबको okay. पता है। हाँ, okay, understandable. हाँ, वो So ऐसे this रहता was है like on when. a like a what? You had like an Insta page or some shit? ना आई डिडंट हैव एनी इंस्टा पेज, आई लाइक मैंने बस एक दोस्त को सेंड किया And it went एंड viral, you know, school में इट कैसे it works. Okay, इट okay. वेंट So सो Even इट yeah. वेंट even इट वेंट चौथी क्लास के सुपर बच्चे ने वायरल, देख लिया. सबको पता है भाई ये मीम है, सबको पता है ये मीम So है। how did it come to the fact that they knew that it was you? अबे Like वो who sold you out? मैंने जिससे भेजा है ना, हाँ. तो लाइक इट वेंट थ्रू कि ये तुझे किसने भेजा, ये तुझे किसने भेजा, ये तुझे हाँ. किसने So eventually भेजा, someone had to sell you out. हाँ, या क्योंकि there was बोला no गया कि option तू, ना. हाँ क्योंकि Yeah, तू it's नहीं understandable. बताएगा तो तू फंसेगा लास्ट में, ऐसा हो रहा था But सबके साथ, लाइक लाइक पूरा ट्रेन के थ्रू एक चेन के थ्रू एंड लाइक एंडेड अप ऑन मी ऑब्वियसली। हाँ, तो वो तेरे पे ही आना था obviously last में. नहीं because हमारे यहाँ पर भी वैसे हुआ है. We have an Insta page for our school. Okay. So उसमें shit talks होती थी हर एक टीचर की and the teachers have noted it and they have seen it a lot of times and they always try to question it. और उनका ये एक सीन होता है ना, I am pretty sure it works in every school, but there is always that one teacher who's like, listen up, okay, we have authority, we can hack, and if you are going to hack us and shit, and if you're going to do all this, even we have someone who can do all that, okay? Yeah. So I can figure out who it is, I don't care. And then at the end of the day, the person who actually did it just confesses because he's scared of the fact that he's going to be revealed. So that is their, the mind games that they play. मेरा But मेरा क्या था, मैंने 11 12th में जब मैं एक बार फेल हो गया था, आई डिडंट गिव अ Yeah. शिट. टीचर्स को पता था इससे बोल के कुछ फायदा नहीं, तो मैं पीछे सोता रहता था. दे आर लाइक सोने दो. हाँ. हाँ, दे न्यू कि दे इसको बोल के Yeah. फ़ायदा नहीं. मैं उठ भी मेरा जाऊंगा तो क्या- आई विल बी डू नथिंग. मैं बंक करने चले जाता था क्योंकि अटेंडेंस एक ही बार लगती थी. पीरियड अटेंडेंस नहीं थी हमारे स्कूल में. एक बार लंच से पहले लगती थी, एक बार लंच के बाद. सो आई वाज देयर जब अटेंडेंस लगती थी, अदरवाइज आई एम नॉट इन इवन इन क्लास. मैं बेकार की shit. वॉलंटियर वाली ड्यूटीज वगैरह ले लेता था और बाहर चला जाता था. That's hilarious because एंड तो मुझे नहीं पता. देयर वाज अ गाय लाइक, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, पाल कुछ था. आई जस्ट हाँ. व्हाट लाइक टीचर था वो. ही वाज अ बायोलॉजी टीचर, तो ही वाज वेरी चिल. तो वो मुझे लैब की दे रखे थे उसने. तो आई यूजुअली तूने क्या किया? व्हाट आई डू, मैं अपना फ़ोन लेके जाता था, ईयरफोन लेके जाता था और लैब में बैठ के फ़ोन चलाता था, मूवी सीरीज देखता था. एंड Damn, bro. ही वाज चिल अबाउट इट. ही वाज वेरी चिल. That's लाइक kind of हम लोग cool. लंच के बाद उधर बंक करते थे, चाय मंगा ली, जोमेटो कर लिया, उसी के बाद बैठे हैं. अच्छा, so you had that kind of relationship with your teacher in school days though. टीचर लास्ट के डेज में. That's very cool though. मेरा वो अभी college में हुआ है. In my school days, I wouldn't say I was anywhere close to any of these teachers like that. Like मेरे college में अभी मैं literally बोलता हूँ, my teacher takes me on bike rides and shit. मेरे को नाम नहीं याद आ रहा. सर नेम वाज पाल, सो वी कॉल हिम पाल सर, बट आई डोंट, इट्स ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा मेरे को. बट ही वाज वेरी चिल. Okay. और वो रिसेंटली आया था, लाइक ही जॉइंड लाइक टू उसी टाइम जैसे वी फेल्ड रिपीट ईयर में ही I'm जॉइंड. assuming he was relatively young. हाँ, ही वाज यंग, लाइक ही वाज Yeah, okay, 26 makes 27 sense. probably. Yeah, that's very young.
था, ही वाज वेरी चिल, लाइक हम बायो में, और वी हैड द ऑप्शन टू ऑप्ट इन हमारे स्कूल में, लाइक मैथ्स और No, बायो. even we had. हाँ तो वी Oh, वर, but you had maths and bio. Okay. हाँ तो इट वाज लाइक बायो में वाज लाइक मोस्ट ऑफ दिस बच्चा वांट्स इंजीनियर ना, वांट्स टू बी इंजीनियर. हाँ. तो इसलिए बायो में लाइक 11 बच्चे थे आउट ऑफ 40, तो इट वाज वेरी चिल. और ऊपर से फिर बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में एब्सेंट भी रहते थे. आई टोल्ड यू ना, इट वाज वेरी बग्ड, क्योंकि हमारा जो क्लास टीचर था ही वाज लाइक डबल पीएचडी और सम शिट, और वो डीयू में भी पढ़ाने जाता था. तो वो क्या कहता था, यूजुअली जो क्लास का मॉनिटर होता था, तो उसको कोई काम देता था वो ना- बोलते तुम लोग देख लो हाँ, मैं जा वो रहा हूँ. अटेंडेंस लगाता था. सो इट वाज लाइक इसको चाय हाँ. पिला दो, इसको ये खिला दो, इसको ब्रेड पकौड़ा खिला दो, ये अटेंडेंस लगा देगा, तुम जाओ नहीं जाओ तब भी. तो इट वाज लाइक दैट. हाँ. सो इट वाज वेरी चिल. अगर वो किसी दिन आ जाता तो उस दिन एब्सेंट लगती थी बस, दैट्स इट. Makes Otherwise sense. you have to fill it yourself, the guy will fill it. Usually अगर you have good relationship with him, he'll do it So perfectly. you can you can Yeah, get free attendance even if you're not going to school. you're bunking and shit, हाँ. whatever. जैसे उसको बोला कि बंक वाले बच्चों की लिस्ट बना दो, so वो उसमें नाम नहीं हाँ, डालेगा हाँ. मेरा. It was like that. Interesting. मेरी स्कूल लाइफ बहुत डिसेंट थी भाई, बाद के सालों में, लास्ट के 2 ईयर्स में. Yeah, I उससे mean, पहले I'm it pretty was, sure everyone's school life was much better than what they are dealing with right now. हाँ मेरी उसके बाद लाइक स्टार्टिंग में आई वाज लाइक अ मॉडल स्टूडेंट, आई ट्राइड माय बेस्ट, Uh-huh. बट नहीं हुआ मेरे से. देन फिर जब मैं फेल हो गया था इवेंट लाइक रोग ना, कि आई डोंट केयर. Yeah, I mean, you went straight to fail, so that's not Yeah. anywhere close to that. या फिर आई वाज लाइक फक इट ब्रो, आई डोंट केयर अबाउट इट. अब वैसे भी बोलना ये नहीं लास्ट ईयर फेल हुए थे, लास्ट ईयर फेल हुए थे, अब क्या करूँगा मैं अच्छा बन के. सो मैं तो यूजुअली यूनिफॉर्म That's कोड भी crazy. फॉलो नहीं करता था बाद में. वरना That's पहले आई kind वाज of- लाइक आई हैव टाई, आई कार्ड, बेल्ट, शूज, सॉक्स, इवन सॉक्स मैच करके जाता था मैं. और फिर ब्लेजर वगैरह. बाद में इट वाज लाइक कि मैं शर्ट पहन के जा रहा हूँ, सर्दी है गर्मी है कुछ नहीं, आई डोंट केयर. और फिर मेरे पास बेल्ट होती थी और टाई होती थी, अगर इफ इट लाइक कोई इंस्पेक्शन हो रहा है तो, दैट्स इट, जस्ट टू डॉज. अदरवाइज मैं ब्लेजर, उसके ऊपर स्वेटर, यू नो जैसे दिखाते हैं टीवी में, सब मैं कुछ नहीं पहनता Yeah, था. yeah, I get it, I get it. बहुत. Yeah, I kind of get it also what you're saying, because in my definition, I would say that compared to both of you, I was like fucking, like I've never been suspended, okay, and I have never failed. So, but I was like a fucking maniac in the college, not college, my school. Like I used to disrupt everything, but at the same time, they never took an action against me. That's probably the reason why I never failed or anything. I have done similar things to what you have done. I was known as a class bully also, if you know. So I used to like, yeah, beat up people for no reason, and I used to get away with it. That's as simple as it is. My school didn't give a big shit about I it, right? decided I'll fucking punch this guy. उसके बाद I just punch. हाँ, मैंने same shit, same उसके balls पे सीधा punch मारा था मैंने. I went हाँ, तो straight मैंने for भी the- किया है, मैंने भी बहुत बार straight for किया. the wall. I have even okay. So this is like back in my first school that I ever went to. So after my sixth, I changed schools. Okay, so most of my memories I would say is like after sixth only. But there's this one memory that I have of my previous school where I don't know. I didn't even like nothing happened to me. That was so funny. Like no actions were taken against me, even though I did something so stupid. So there was this guy standing next to the door. Okay. And I just wanted to beat him up for some reason. I don't know why. Don't question. It's just a bully mindset. I have no fucking idea why I wanted to beat him up, but I wanted to beat him up. Okay. And it was not your typical beating up also. Like I was not gonna just like continuously beat the guy up or anything, because if a teacher walked in, I would probably get screwed instantly. So what I did was like it's like a one-time beat kind of thing. Like I have to make sure I damage that guy in one shot. so it's what I did was the door had like a very sharp edge on it. Okay. So what I decided to do was like take his head and like bang his head into that sharp edge. What the fuck, bro? That's like. Yeah. So my man started bleeding from the head and shit, but I still didn't get anything against my name. One I time what didn't get happened in my suspended. school है, मैं बताता हूँ तेरे को. This was like तेरे से भी ज़्यादा खतरनाक. मेरे साथ नहीं हुआ था ये, मैंने बस हमारे स्कूल में like it went viral. One guy, Okay. एक बंदे ने क्या किया, he took the compass, ठीक है, हाँ, और किसी okay. की सीट के नीचे रख दिया और उसकी गांड में पूरा चढ़ गया वो एक्चुअली. हाँ हाँ हमने भी किया. हमने वो वाला किया. हमने वो बोर्ड पेन्स आते हैं ना छोटे छोटे. हाँ हाँ हमने मल्टीपल ऐसे किसी के गांड के नीचे रख दिए थे. वो बैठ गया लिटरली. भाई उसने Like that was still normal for us. वो खड़ा था, वो घुस गया, उसको डैमेज हुआ भाई गांड उसके में? इसमें. हाँ घुस अच्छा, गया पूरा वो. घुस गया. वो नुकीला था, लाइक यू नो कंपास ना शार्प होता है. वो खड़ा था, हाँ, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे स्कूल से. वो Crazy, crazy. वही. और वो बंदा थोड़ा सा लाइक व्हाट डू यू कॉल, लाइक बुली होने वाला बच्चा था वो. ही वाज लाइक दैट.
हाँ, okay, okay. यू गॉट द ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. ही वाज Yeah, लाइक yeah. थोड़ा अगर तू उसको बोल देगा ही वाज ऐसे वाला. अगर हमारे इफ यू विल क्लास में इफ यू वही सेम बकचोदी सैम होता यू था. विल थिंक लाइक इसको बुली किया जा सकता है ना, समझ रहा हाँ, है. true, true. उसी टाइप का था वो बंदा भी जो जिसके साथ ये हुआ था. इट वेंट वायरल लाइक उसकी सीट पे से उसकी सीट खून खून हो रही थी, उसकी गांड में से खून निकल रहा था. सबने जाके देखा था. उस टाइम पे मैं भी स्कूल में ही था. इट वेंट लाइक हाँ. बहुत ज़्यादा हो गया था उस बच्चे के साथ, बेचारे के साथ. लाइक आई फेल्ट बैड बाद में कि सारे की That's गांड में great. वही. इट Yeah. वाज और वो पूरा अंदर चला गया था उसकी गांड में. Oh, और damn. ही वाज लाइक गुड इन स्टडीज बट लाइक समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. I mean, most of the people that get bullied are end up like always are good at studying. It's always the nerds that get bullied. ना मेरी क्लास वाले नर्ड्स नहीं थे ऐसे. दे वर लाइक नहीं, वेरी हमारे nerds भी थे, bully भी होते थे, and the people that just generally seem like, no social interaction, just wanted to keep studying, try to be the model student, they are the ones that get bullied. ना मेरी क्लास में Because ऐसे like, बच्चे why थे ही the नहीं. fuck are you trying to be a model student? Everyone's going to take you as an example, and then I'm going to be the bad one out. So, those people end up being the bullies. मेरी I क्लास mean, में getting bullied. इट वाज लाइक पता नहीं क्या था मेरे 11th 12th और इसमें मतलब 9th के बाद से. इट वाज वेरी आई वाज लाइक इन टॉप 3. ठीक है 9th से पहले तक. ठीक है आई वाज इन टॉप हाँ. 3. 9th के बाद 6-7 बच्चों ने ज्वाइन किया. दे वर लाइक फकिंग पता नहीं भाई प्रॉडिजी थे Okay, सारे. understandable. 99 90 मेंस में 100 लैंग्वेज में सिर्फ एक नंबर कटा है, वो भी ग्रामर मिस्टेक थी क्योंकि पूरे 99 मैंने कह रहा भाई ना अब तो करना ही नहीं है. तो और वो ऊपर से लाइक बात तो इट है. वाज लाइक इनकी पर्सनालिटी बेकार थी. लाइक बस पढ़ना है. दे वर लाइक चिल भाई. मैं उनके साथ बैठता था, खेलता था, लाइब्रेरी में घूम रहा हूँ, ये सब. दे वर लाइक चिल बट दे जस्ट गॉट द माइंड दे वर लाइक They had दैट. that trigger, that they just swapped instantly. पढ़ाई 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 पढ़ाई. हाँ दे लाइक और इसने एक बार पढ़ लिया इसको याद हो गया. ऐसा था उसका सीन, इनका सीन. अच्छा, वैसे वाले. Okay, 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 okay. मेरे पास भी एक दोस्त है वैसे. एक And he नहीं is था my ना. childhood friend from like more than 10 years हाँ, now. तो And I still don't have good contacts with him. द थिंग इज लाइक एक बंदा नहीं था. एक बंदा होता है इट इज कोपेबल. ठीक है 3-4 It's like बच्चे. four, five. तीन बच्चे थे आई थिंक. हाँ 3 बच्चे थे. हाँ. और उनमें कंपटीशन होता था. तो यू लाइक नॉट पार्ट ऑफ द You are कंपटीशन. not even part of it. हाँ, Yeah. you're like- Before you used to like be competitive. Yeah. Actually, the thing is like you used to feel like you were in the top because there was nobody who was really हाँ, giving you a good competition. yes. That's always, fake pleasure that you get. हाँ It उसके always बाद happens. मतलब ईगो जो शैटर करता है ना वो एक्चुअली. हाँ, वो एक टाइम पे जब shatter होता है Like ना, teacher so was it's going hard to like try. Hamad and teacher just went Chiranjeev Isa it's like that. Yeah, I have had that similar situation because my 11th and 12th were filled with just 11th like 12th was what तो the hell, bro? Like how? हाँ How do you study that much? 11th 12th तो was fucked bro. Every single guy was 93 95 96. No, it was there were few people. Okay, so it's basically like I knew probably like 50 people or something at max from like I think we had 2 sections, so both of them had like 30 or something, 30, so maybe 60. Hmm. So out of those 60, I would say like 45 were just straight up dumb. Okay, they don't give a shit about anything. भाई मेरा तो They सुन just लेना, go ये do तो whatever the crazy fuck, actually. and I eventually joined that 45, but I was not part of that 45. And when these 15 people that I'm talking about, right, they were just built different. It was either like they did a good job, they studied, and they were like decently scoring, like 90s, 91, 92. Yeah. Those are still, I find those still normal. Consistent Okay, they are players. still, yeah, they're consistently at 19, 89. I feel like they are still, somewhere they're normal. Okay. But then there are those few people, that 5 to 6 people that just can't score below 95, even if it's like a Even small, if they did not like study. a test, like a surprise test. Okay, you get that and shit, and they are like betting their lives on that test. I'm like, who gives a shit नहीं about नहीं this I've never test? met Okay. people like those. जो No, like- I have people like that. Okay, No, and नहीं, I got बिल्कुल. so pissed off. You know what I did? In my that particular test, it was a chemistry test. Okay, and the teacher was kind of chill, but obviously I was like one of the smarter students in chemistry at least, and I fucking stopped giving a shit at that point, where I wrote for all the questions from 1 to 10. I don't know, and in one question I wrote I don't care and submitted it. And she was like, what the hell is this? I'm like, I really don't know. What do you want me to बाद में when I went rogue ना, I used to do the same. मैं खाली छोड़ देता. I was like इसके marks तो count ही नहीं होने कहीं पे भी. What will they do? वही. तो मैं छोड़ ही देता था. I was like fuck it bro, करूँ क्यों मैं. So that was pretty much most they in can my do is 11th. humiliate you. बस. That is there. Exactly. That's it. और अब उससे Yeah, फर्क I'd- पड़ना बंद हो गया था. I would say I would be in that particular position in 11th because I didn't give a shit about 11th. हाँ, same, 10th same, I gave massive shit, like it was like important to me.
for हाँ some reason, like my parents got me into that mood, you know, that like I have to study, fail हो जाऊंगा मैं, मतलब हाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में, I wouldn't मेरे पेरेंट्स progress. तो हमेशा से मुझसे कहते थे 9th में फेल हो जाएगा 10th में फेल हो जाएगा जबकि आई वाज लाइक हाँ डिसेंट वो व्हेनेवर दे यूज्ड टू गो इन माय हाँ, पीटीएम okay, ना so you had like that negative kind of हाँ support from behind. हाँ इम्पैक्ट I mean नहीं negative आई energy. आई नेवर यूज्ड टू स्टडी ब्रो मैं घर पे आके कभी नहीं पढ़ता था Okay, no, तो because I used to, like I was forced to. हाँ I was मैं always forced to be in the positive मेरा world. मेरा क्या रहता था स्केड्यूल आई मैं स्कूल गया आई कम होम मैं 1 घंटा रेस्ट किया मैं आई वेंट फॉर कोचिंग ठीक है उसके Uh-huh. बाद पूरे दिन कुछ नहीं आई एम प्लेइंग गेम्स या डूइंग माय शिट व्हाट एवर आई लाइक बस सो दे वर लाइक Similar to mine. Yeah. हाँ यू विल गेट यू विल फेल यू विल फेल मेरी बहन ज़्यादा कहने लगी थी तो मैंने लाइक आई पास डिसेंट नंबर से 10th 9th ठीक है उसके बाद Uh-huh. 11th में आई एक्चुअली लाइक आई गॉट दैट फोर्टनाइट शिट ना आई वॉज मेकिंग मनी सो आई गॉट इनटू दैट और उसके बाद आई वाज लाइक पैसे आ रहे हैं फक इट ब्रो आई डोंट केयर उसके बाद मैंने आई ट्राइड टू लाइक डॉज एग्जाम्स की मेरे को तबीयत खराब हो रही है आई डोंट वांट टू गिव आई डोंट वांट टू गिव समहाउ लाइक माय फादर कॉल टीचर एंड उसने कहा कि हम लोग इसको अलग बिठवा के दिलवा देंगे इट्स फाइन लाइक ये जल्दी दे के चलाएगा एंड ऐसे 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 सो मैं गया और मुझे लड़ा कुछ आता था बायोलॉजी का एग्जाम था और फिर मैं दे गया खाली छोड़ गया पेपर Damn, it's crazy though. तो Like the main thing about that is right, like I can never get to that point where if it's like an important exam, I cannot just go and write nothing over there because I had that accountability कि घर पे जाऊंगा तो मेरे को बहुत मतलब हाँ। प्रॉब्लम होने वाली है. Like my parents were like a bit too much on me, like even my grandparents. Like ना though it's a good thing, I feel like you know I have definitely a better person. इट वाज because लाइक of that. मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था मेरे फादर ने मेरे को लाइक स्लैप मारा था पहली बार Oh. लाइफ आफ्टर 11th सो यू नो लाइक इट Means- वाज इंपॉर्टेंट टू हिम टू वो मेरे से Yeah. कुछ कहते नहीं थे कि पढ़ाई कर लेगा दे लाइक ही स्टडिंग बट आई वाज लाइक स्टडी के नाम पे आई वाज प्लेइंग गेम्स एंड शिट सो इसलिए आई टुक लाइक Okay, okay, I get it. दूसरा साल सीरियस लाइक लिटिल बिट देन आई डिड Yeah. I mean, it's not because just generally you don't care about it anymore, but you're just like guilty because your parents had to deal with yeah stuff. he trusted and like I That is the एटलीस्ट पास हो worst जाता thing. कुछ नहीं That kicks very hard. वही That is mostly the Plus, it drive was like factor in. many. I have done like a lot of things, but he never like slapped me or did something. Like he shouted, लेकिन पहली बार like I got like slapped. हाथ उठाया. Yes, so I went like, हाँ. nah, bro, like he's hurt. That's why. ऐसा नहीं like I felt it or something, but it was like that. समझ रहा है? तो इसलिए Yeah. I was like कि यार गलत क्या है? I should have worked hard. हो जाता टाइम वही. तो बहुत टाइम तक I was in regret. फिर उसके बाद मैंने लाइक अब 1 साल पढ़ा ही था मैंने 11th में दोबारा पढ़ा नहीं था कुछ भी आई लाइक थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह जा रहा था एंड बस उससे से हो गया था आई रेड नोट्स उससे 11th पास हो गया था एंड 12th में आई डिडंट नीड टू गिव एग्जाम्स एक बार मॉक हुए थे उसी से पास हो गए थे एंड मॉक वाज इजी That's कंपैरेटिवली crazy. क्योंकि कोविड आ गया था उस टाइम अच्छा मेरा खत्म हुआ था एग्जैक्टली जब मैंने उस दिन खत्म किया ना लास्ट बोर्ड एग्जाम दैट डे कोविड का रिस्ट्रिक्शन चालू हो गया लाइक यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस ना तो आई वाज लाइक ओके हमारे टाइम पे एग्जाम होंगे हो रहा था देन इट वेंट लाइक विल गिव लाइक यू नहीं हमारे हो गए थे लास्ट एग्जाम एग्जैक्ट डेट सेम आई स्टिल रिमेंबर इट दिस डेट क्योंकि हमारा दो टाइप के थे मतलब तू बोल रहा था ना लाइक यू हैव आइदर बायोलॉजी और मैथ्स हमारा क्या था वी हैड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर्स सो आई डिड बायोलॉजी इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स एंड the people that had to do computers, right? So our biology exam was probably like, I don't remember the exact date, but imagine if it was on the 17th, the computer exam was like days after that, so like 24th or 25th. So they didn't have to come on the day we gave our biology exam, but that was the last day of the COVID, like when the COVID started. So basically they had to continuously study during the vacations also. Like हमारी छुट्टी लग गई थी, but computers वालों की घंट लग रही थी continuously. So like I still remember it this day, like that was like one good thing about whatever happened to me in 12th. भाई इट वाज वेरी फकिंग लाइक मेरी स्कूल लाइफ लास्ट के ईयर अच्छे भी थे और बहुत बुरे भी थे अगर आई विल थिंक अबाउट इट Yeah, it's both. बहुत अभी जैसे मैंने सोचा है मैंने नेगेटिव्स बताया तेरे को इट वाज लाइक दैट Yeah, it has its negatives and its positives. It's understandable. द मोस्ट फन आई हैड आई मेड अ रोबोट वॉली Damn, you are one of those Three Idiots का वो ना इट वो जो वाज लाइक बंदा एकदम ड्रोन लेके आता है अंदर लटका लेता है I'll tell you आपको. the story इट वाज लाइक कि एक ना साइंस होने वाला था साइंस फेस्ट कुछ तो था कन्वेंशन सो पीपल विल कम लाइक स्कूल के बाहर से यू हैव टू मेक समथिंग इन लाइक ईच कैटेगरी सबको बनाना ही था कुछ ना कुछ एक सिंगल प्रोजेक्ट हाँ और अगर तुम नहीं बना रहे तो यू हैव टू एटलीस्ट गिव द नेम इन द लिस्ट तो वो इट वाज इजी क्लास बंक फॉर लाइक मंथ
सो दे वर सेइंग लाइक तुम लोग सिर्फ पार्ट्स लेके आओ लाइक खरीद के स्कूल से, स्कूल विल फंड इट, और बस बैठ के स्कूल में ही बनाओ, इट विल बी फाइन. सो हम लोग क्या लाइक 4 या तो 5 ग्रुप थे, वी गॉट लाइक समथिंग फ्रॉम क्लीनिंग एंड शिट, वी मेड वॉली. Damn, that's सो kind of cool. इट वाज वर्किंग बट बहुत गंदा भाई. लास्ट के दिन पे लाइक 11 बजे कन्वेंशन है, हम लोग 9 बजे मैंने हाँ, स्कूटी निकाली, वी वेंट टू चांदनी चौक रोबोटिक मार्केट. वहाँ से जाके हम हाँ. लोग कुछ तो सेंसर वेंसर खरीद के लाए थे लास्ट में, और वो चला नहीं था, फिर हम गए नहीं थे. Damn. We didn't went to- बस हमने क्लास टीचर को दिखा दिया कि हमने ये बनाया और दिखा दिया. उसको पता भी नहीं चला था, चूतिया साला. Hmm. वो वही बंदा था जो अपनी सारे काम बच्चों पे डालता था. Yeah, of course. एक सेकंड कॉल आ रहा है. हेलो. MJ, your turn. बहुत देर तक शांत रहा तुम. सुन रहा हूँ भाई स्टोरीज. खुद के स्टोरीज बता. स्कूल में क्या क्या बकचोदी हुई है. Any good moments? Anything that you like? Nostalgia, hate, that kind of shit. Go ahead. Let me think if I have like how I don't remember it properly. अभी अभी we'll Something go that with is in your something mind else. for. छोड़ छोड़, अभी we'll go with something else. Okay. Hmm. लाइक एमजे बता भाई, तेरी सोशल लाइफ कैसी है? आई मीन लाइक डू यू एंजॉय योर सोशल लाइफ, और यू लाइक करना है तो करना है? मैं पूछ रहा हूँ लाइक लेजिट. Social life That's actually a good question. IRL वाला. आईएलएल वाला, हाँ. सोशल लाइफ, सोशल सर्कल, सोशल लाइफ. आर यू लाइक हैप्पी, या फिर यू लाइक दोस्त हैं जाना पड़ेगा? एक्चुअली पूछ रहा हूँ सीरियस. लाइक व्हाट डू यू थिंक? नहीं अच्छा है भाई मेरा. Like, Like legit अच्छे दोस्त हैं. तो he is दोस्तों की stable, बात yeah. दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं. हाउ डू यू फील लाइक सोशलाइजिंग एंड शिट? सही है भाई मेरे को अभी Like, do बुलाया you find socializing a pain? That would classify you No. into introvert category then. लाइक फॉर मी व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं आई एम वेरी सोशलाइज्ड, मैं लाइक मैं ऐसे नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ. आयुष ने मुझे देखा लाइक आई कैन डू शिट, लाइक मैं जाके ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता है ये. हाँ, झारखंडी के जाके बोल सकता है ब्रो, नाइस टी-शर्ट, कैन आई टेक अ फोटो हाँ. विद यू? तो इट इज़ नॉट लाइक कि मेरे को ये सब इशू है. इट इज़ लाइक कि मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड जब हो जाता हूँ, आई एम लाइक कोई मेरे को लगता है ये बंदा मुझे जज कर रहा है, समझ रहा है? अगर इफ़ आई फील कि ये बंदा मुझे कोई सामने से जज कर देगा तो मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. अभी हुआ नहीं था वहाँ ट्रिप पे ऐसा कहीं पे, बट स्टार्टिंग में लाइक आई वॉज ऑकवर्ड इन सब के साथ भी. शुरू का 1 दिन 1.5 दिन, बट फिर आई ओपन अप तो ठीक हो गया था वो. बट मेरे को यही इशू होता है, दैट्स आई डोंट लाइक सोशलाइजिंग. मुझे जो एंग्जाइटी होती है ना, सोशल एंग्जाइटी, वो बहुत हिट करती है बाद में कि जज कर लेंगे Yeah, ये सब. I'm similar to you on that, but like yeah, I really don't like social. बट इट्स नॉट लाइक कि socializing. मेरे को इशू होते हैं कि अब मैं किसी से सामान लेने जा रहा हूँ, आई कैन नॉट बार्गेन, इट इज नॉट लाइक दैट. So exactly. The thing is, people like us, right? We are selective socializers. तो What वही I would say is like it's not even an introvert, right? Because it's just more of I can't. So it's not I can't socialize. I don't want to socialize. हाँ, आई जस्ट अरे मतलब आई वांट टू सोशलाइज भी है मेरा सीन, बट आई कैन नॉट. मेरा- अब मैं कैसे समझाऊँ तेरे को? मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है. तो यही एमजे से बोल Okay. रहा हूँ. एमजे को बोलने दे इस पे, रुक जा. एमजे की बारी भाई, बहुत देर से सुन रहा है. भाई मैं मेरे तू क्या फील करता है भाई? खुल जा भाई, कोई बात नहीं है, आपस में लड़ने लड़ने बैठे, कोई नहीं सुन रहा है. वीडियो में प्राइवेट कर दूंगा मैं अगर तेरे को. मेरे मैं भी लाइक ऐसे नहीं है कि मैं जाके बंदों से रैंडम लोगों से सोशलाइज कर रहा हूँ. मेरा भी ऐसा नहीं है. हाँ. कुछ लोग ही है नहीं, अगर हाँ, अगर सामने सुन अगर सामने से अप्रोच आता है तो आई नेवर रिजेक्ट देम कि नहीं मेरे को इस बंदे से नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचता हूँ. कुछ लाइक कर रहा है चलो तो वो आता हूँ, बाहर बुला रहा है तो. सुन लेता हूँ क्या बोल रहा है. ऐसा मेरा पहले सोशलाइजिंग का सीन Oh वाज wait, no. Before we do that, so what is your opinion of like approaching people? Do you approach people, or is it just you wait for people to approach? I usually wait. I don't Okay. approach. Because I know a lot of people that like just keep approaching people. I'm like, how the hell do you end up making so many friends, dude? That's probably, I mean, the simple reason is because they are approaching that many number of people. ना But ना, द थिंग इज आई कैन नॉट अप्रोच पीपल. ये भी है मेरे साथ इशू. even I can't. दैट्स नॉट Yeah. माय कप ऑफ टी. आई एम लाइक मुश्किल है वो. फकिंग भाई, Same. बहुत बहुत हार्ड शिट. Unless you have something from them कि कुछ तेरे को काम करवाना है, तेरे को कुछ काम है, तेरे को कुछ Yeah, पूछना है. okay. If it's work related shit, then yeah, okay, I can do it. ब्रो मैं Like, As डिस्कॉर्ड long की as भी there बात is a कर रहा हूँ. solid reason behind it, right? Like I can do it. But if it's just something that I have to do it for my sake or for my own thing, I don't care. But I don't want to do it. I don't want to. Yeah. मेरा क्या सीन है? मेरा डिस्कॉर्ड पे भी सेम है. इफ आई जॉइन एनी वीसी, ठीक है, तो आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद देम इफ आई डोंट नो देम.
मैं बहुत Same. awkward रहूँगा VC में भी. I will like fuck, क्या बोलूँ मैं, कैसे कौन बनाऊँ. Hey, but I still Should be feel like fine. you are better on that aspect. You can just join any VC and just still be you. You're not very different from. But it, I have like problem, like मेरे को हो जाती है anxiety अंदर. I feel like you're honestly much better than me in that case. Because for me, right, whenever, like I told you, right, I was searching for new friends and shit during the time that I was not, हाँ like हाँ हाँ. after Veno left, immediately after that, I was searching for friends, right? The thing is, I had so many servers that I could like just pop into and just like Yeah, just hello. start talking. But like I can't because I don't know what to start off with. I don't know what to say. I just can't. Yeah, It's just that is very my hard for me problem. to That do, is and I can't be me also in front of them because I I'm know. just a very different guy. I know. Same. So usually what happens, like I joined this survey वाला group ना, like there are people Yeah. 4-5. तो मेरे को 1.5 महीना अभी I opened up a bit. Like मैं इतने टाइम से like I was like not that much open. I opened up a bit. अभी मेरे को like they know me like how I am. Otherwise I was like normal बंदा आके रोज खेल रहा है, normal बात कर रहा है. It is like that. But like मैं Yeah. अच्छे से open नहीं हो पाता, you know मेरा humor कैसा है, how am I, ये सब Yeah, अभी the worst part, हाँ. I think the thing about most guys is, right, it's like their humor is their best part, also their worst part. हाँ. It's like because our humor is like, it's like Very dark, like very बहुत very अजीब. dark humor, very dangerous humor. Okay, हाँ. it's not something that you should just be हाँ. openly telling that I I cannot make just these so kind of South jokes. Indian idli racist sexist. Yeah, and there are people who enjoy that. I mean, most people once you get slightly like opened up to and stuff, they will also enjoy it to a certain extent. Even But just strangers, you just go and then you're like, bro, South Indian by Gandwara bands. वही. That's not how shit works. Even अगर VC में कोई ऐसा joke बना भी रहा होगा ना, I will not join at that time. Because like I Yeah. don't know how they will judge me या क्या इसका outcome हो सकता है. They will like fuck क्या joke बना दी इसने. और मुझे पता नहीं if I start making joke एक बारी, और मेरे को पता नहीं मैं किस extent तक जाऊँगा फिर. क्योंकि Yeah, joke that में is I also don't think that much. मेरे को देखा ही है तुम लोग ने. I mean just कुछ भी बोल देता हूँ मैं. Sometimes I just roast myself, bro. Yeah, that is also there. Actually, because of you also, Sayan, right? So हाँ. because of you only, I have got into the habit of calling him South Indian now. Like because like you have given me that approval कि इसको बोल सकते हैं, and he doesn't feel bad about हाँ, it. he doesn't feel. Like because I'm at the end of the day, I'm also South Indian. Yeah. What can go wrong, bro? Right. I'm literally friendly firing someone, and Like- he knows it as a fact. I knew this guy like from last year, और मैं इससे अभी like last के 2-3 months में I open up with him. So it was, but like for you guys it's easier because I bring him in and he was like same, उसका humor था and वो भी easily open up हो गया, so it was easy. But it took Yeah, I me mean, I like can definitely see. हाँ बहुत time लगा था मेरे को इससे like settle in and shit करने में. Yeah, that is hard. You never know, like when is that settling point? Yeah, You have to make because this guy was like like a judgment of supplier your own. and shit. ऐसा Yeah, नहीं था, exactly. You he don't. he It's was not like you don't end up being like, bro, my drug dealer. Do you want to be my friend? Friends yeah. with my Yeah, people? Like, this- no, dude. He's there for business. He will do the business and yeah. leave. But like actually to get close with someone, you have to have that right judgment. Ki, am I close enough to like probably Call him introduce him South to a Indian. couple of my other friends and and then like call him South Indian, make jokes. And if he's fine with other people also trying to join in those jokes. Yeah. Because if honestly, if say imagine you're just a random person and some random guy who's obviously like a mutual friend, okay, not your friend, he just comes and starts roasting you for absolutely no fucking No reason. fucking way. There is no way you're going to sit there and just take that. Starting You'll में, probably like- leave the server, or starting you'll में just be when like, he bro, who the hell is that guy? joined, He's trash. Actually, like Shiki was trash when he joined. I told him like इतनी जल्दी jokes मत बनाना. I just recently invited him, and I don't know him Yeah. that much well. But that guy went like full on out, like South Indian बोल रहा. He was doing No, like like weird that, shit. even yeah, we all were just like, bro, what the hell is wrong with this guy? वही. So that's why I kicked him उस time पे, and वो 2-3 दिन में he settled down and we were all making joke. He was fine. Yeah, he doesn't have that understanding. Usually what happens is if अभी उसने like he joined for a game और उसके बाद you're like South Indian, fucking South Indian, what are you doing? वो ऐसे ही उल्टे सीधे jokes बनाता है. It was like that. Yeah, So that's not how. तो वही मुझे जब there's a उससे- limit to it also हाँ. in certain extents. It was first time, bro. This limit. Yeah, that's what. Hey, limit also what I'm trying to say is like a limit keeps increasing as in when you spend time with the person, right? So Yes. at that point he broke the limit already. Yeah. वो Like एक limit होता है उसने normal push कर behave दिया. करने की. Yes, उसने जब भी push कर दिया like 2-3 round. तभी push कर दी उसने limit. वही. Okay, sure. If you're getting to know that person and shit, the limit will slowly keep increasing. The bar keeps raising, Yeah. and you can continue on the jokes and shit, and probably he'll play along with you. Just And like that kinda now. makes Just like now. Exactly. That. So I don't know. He just
there are still so many people that don't understand that. I find myself as a very like socially awkward person. Like I have troubles understanding a lot of things, but same भाई it's बस so hard. It's so funny and hard to see that there are people who don't understand that also. Like how do you not get that? It's so simple. मेरी Like मेरी this is probably the most the basic of the the basic, and you most don't thing like understand. which like मेरे को बहुत ज़्यादा social anxiety देती है is female interaction. मैंने Oh 12th yes, के बाद it's very hard. 12th के बाद 3 साल आई वाज लाइक मैंने की ही नहीं, ठीक है, और जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी आई वाज लाइक चल भाई इससे मतलब ही नहीं, फक ऑफ, मतलब इट वाज लाइक दैट. और अब मैं किसी से फीमेल इंटरेक्शन करता हूँ आई एम लाइक वेरी, मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है. इट्स लाइक फकिंग हार्ड, बहुत हार्ड रहता है. Okay. इवन दो आई हैव अ गर्लफ्रेंड इन 11th, और मेरी थी, आई हैड अ गर्लफ्रेंड इन 11th, और उसके बाद भी आई Yeah, हैव दिस प्रॉब्लम, लाइक स्टिल आई हैव दिस प्रॉब्लम. it's understandable. I तो mean, I can't have that leisure because in my college it was basically like Russia ka population. It was 1:9 ratio. So every 2 guys there were like 8 girls. Okay, so uh, I never had the opportunity to like pick and choose my friends, and even if I did, it used to end up being like really weird ass fucking like guys are so weird in our college. Okay, I just can't get close to them. But when there are some girls that just hit the right spot, for example, I told you Grey, right? yeah. Like she hits that right spot. She's just like the best friend I have. It sounds so bad. Huh? She's hitting the G spot. No, the right spot, not G spot. Same thing. तभी Yeah, like मैं yeah, समझ गया, okay. मैं समझ गया. Humor हाँ. matches, like your vibe matches and shit. Yeah, it's like, dude, even though interest like same she has नहीं a है. boyfriend and shit, like I don't care. Like that's not the reason why I'm being friends with her. I got you. So it's just so hard to find those kind of people. नहीं मेरी फीमेल इंटरेक्शन इवन इफ आई डोंट वांट देम एज माय गर्लफ्रेंड और जस्ट अ फ्रेंड, लाइक तब भी मेरी बहुत awkward रहती है. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इफ Okay, आई so गो विद हेलो हाय देन इट विल लाइक मैं आई विल स्टॉप माय, लाइक मैं खुद ही छोड़ दूंगा तो 3 दिन में. फक इट ब्रो, आई डोंट केयर. Probably like because they don't want to talk to me or Yeah, something. You'll have those constant thoughts in your mind. Yeah. I have like Like you're insecurities. judging yourself. Yeah. Yeah, that's what. I kind of get it. People like but MJ I never get have these feelings, bro. changed a little. क्या? People like MJ never get these feelings, bro. Yeah, because they just They are just check magnets. fucking lizards, bro. The Yeah, lizards. Results. That's why MJ cannot join Yeah. this convo. Yeah, that's why he's quiet, I guess. I mean, he doesn't understand any of these, I guess. So, He's like, what the fuck, मेरे दोस्त इतने man अजीब is हैं. just a bit different, bro. Social interactions are so fucking easy, bro. What do you mean? I just made What? 300 followers last night. नहीं Like, Bhai, we just Yeah. yes, therapy session 1 घंटे 6 मिनट से चल रहा है just Yep, yep. ये पार को खत्म होने वाली है. yep. I mean, the Minecraft video is still going on, so I'm waiting for that to end. That's it. But it's fine. Like I think I'm improving myself बहुत सारे ways में, like nowadays. Yeah, that's good actually. I'm trying Like to. when you know where your mistakes are, there are very good chances that you correct those mistakes. But still, like sometimes ऊपर से family का pressure भी रहता है. You're not giving us enough time and shit. But लेकिन I'm somehow managing और हो भी रहा है भी. I feel like मेरी life थोड़ी better हो रही है. That's good. Like Usually what? okay. Fuck man, this is gonna be really weird, okay? But like, I end up watching a lot of weird shit on YouTube, okay? So, when I mean weird, it's not like I'm not talking about like fucking children, some kind of weird shit like that, okay? Like I'm not talking about that kind of stuff. It's just like it would be weird for a person who thinks their life is normal. Like, okay, so I was watching this video yesterday where there was this one guy who was like ranting. The video title is just straight up. Let me just quickly look it up. Wait. Pretty sure I remember, but it was just like no friends, no career, and I'm 29. I have seen that ganja guy, Exactly. right? Yeah, the ganja guy, the ganja guy. Yeah, I have seen that. So I ended up watching more videos, and I'm just like, dude, is this going to be me in the future? Like, yeah, I was like that. That's why I started. Like मैंने जब उसकी video देखी थी, I was like, nah, bro, I cannot imagine myself there. I was like that. it's yeah. मेरा scene was अलग. It can be different for you, but the first thought I had is this me in the future? After reading Exactly. the title and watching That's exactly what hits you. You try to like basically how I break this down is you see his life at 29, right? And the way he explains The his thing, problems and his things that he's facing, and what you try to do is technically just match all the things that you do and see if it is similar to his. And when you start doing that, you start getting afraid that, dude, these things are kind of matching together, and Bro, is it I going to felt end up bad being for me? him, but it's like I cannot like वो देख के
he looked like way too lonely, समझ रहा है? Yeah, he was like no, there are okay. So I wouldn't. The thing about him, right? When he says no friends, that is actually a very bold statement to make. Because I don't like saying that I don't have any friends, because for my friends, the people who are my friends, genuinely, I feel like I'm disrespecting them by telling them that you are Yeah, not my yeah, friend. yeah, yeah. If I think Adi is my friend and he's saying no friends, no friends, I feel like मेरे को लगता है Yeah, क्या like फायदा, नहीं he's मानता just straight up disrespecting है. the fact Yeah, that what are we then? Like, what are didn't we I then? ever didn't I ever spend time with you? Didn't we Yeah, ever have fun and shit? Like, okay, it is up to you to judge whether you want to be friends or not. but But like, that's kind like of saying it open and over the aloud. top. Yeah, Yeah, that's it's like I thought he was like a friend, ठीक है? And then when he exactly. started ranting, no friends, no life, no shit, I was like, bro, this guy never thought of me as a friend, and I tried to be nice to him and shit and shit. So So that those is things one went thing that through I my mind. cannot relate with this man. Like the fact that he mentions I have no friends. Yeah, Like, yeah, actually, I how got do you you. not have anybody to go towards? Like, okay, maybe you don't have to like socially interact with them and shit, Yeah, but like yeah. just that one or two people in your life that you can't even like rely on at some point of time in your life, or just not even rely, just talk to. That guy Like is like way fucked up he's like version an of us. extreme Yeah, case yeah, of yeah, this, I way feel. fucked up. Or he's just capping. I mean, there is a very high chance that he could Nah, be but capping that that guy and was again crying be. and it looks legit. No, even I would probably cry saying that, I हाँ. don't have a lot of friends. You can have Having a friend, lot. but having good friend is different. Yeah, exactly. I think that I'm not sure if he understands the difference between having no friends at all or not having enough friends. I don't know whether he knows the difference between them, See, but I definitely felt bad for him, obviously. Like, yeah, if he's mentioning whatever he mentioned and if all of it is true, then he's an extreme case. yeah. And that is not something I would want to But end if up you being. go in the past, the video like उसकी video में it's like all his mistake, what he did, what he did not. And at the end it comes to that कि इसने अपनी life बहुत fucked, like he made like some fucked up decision for short term happiness. Exactly. It came to that at the end. Like So, I can never be him, but I think कि I can be him. समझ रहा है? yeah, it's not like you can end up being exactly like him, face Because the I have difficulties that friends. he faces, Yeah. but we have our fair share of difficulties, and we are facing things that he faces as well. Yeah. It's more of like something that everybody shares these kind of things, but one person has it in a more extreme case. या वही अब देख सी अब यू रिमेम्बर कि आदि ने एक मैंने आदि से वेंटर किया था ट्विटर पे लाइक आई हाँ, वेंट और मैंने उसको कहा था कि व्हाट डू लाइक यू कंसीडर दिव्यम एज एंड क्वेश्चन मार्क सो ही सेड फ्रेंड देन ही लाइक थोड़े टाइम बाद ही पोस्ट नो फ्रेंड्स सो इट्स नॉट दैट that's that's very disrespect weird. like yeah that No, is I very mean, okay, yeah, I get why you're kind of weirded out by him as well, weird yeah because I consider him as a very good friend. You know that, right? Like yeah the I amount know of time I've spent with him, see I've so जब there are a lot of things that I wouldn't want to mention to when I everyone, but when I we have joined been on, yeah, when I joined it was uh, Adi Ayush together exactly. always It was basically we Adi used to Ayush sit. yeah So he used to rely on me to a certain extent, Hmm. where he used to like actually Discord call me at some times, and he once actually let go of everything. He just straight up started ranting Hmm. about his life, and I was there to listen to it and to obviously guide him and support him and Hmm. whatever, help him out, Hmm. because I considered him as a good friend, right? Yeah, yeah, I don't have an issue with it. But yeah. then the way you mention things, right? Hmm. It actually hits me like why nobody wants to associate with him anymore. Hmm. It's just the fact that if you are lonely, if you are not having friends, if you are in depression, all that is cool. Okay, you keep that to yourself, or you rant it out to a couple of friends that you have. Yeah. Posting it on Twitter and shit, open social media, having it to be displayed amongst every single person, Why? like you're trying to, like, I don't know if that's, I'm not even sure if that's an attention seeker move at this point, but like I don't know what is going on. It Like it he's just it is like very this strange. this statement works against him. समझ रहा है? उसके Yeah, exactly. like even if he doesn't think of me as a friend, I was thinking like कि मैं इससे nice हूँ, I invite him to play Valo, he come like ऐसे ऐसे, and he's a nice guy, Exactly. like he chats with me, sometimes he comes to EC, but when then he started posting no friends, no friend, bro, what am I to you, like a guy to like time pass? Exactly. You start. It's Yeah. not a thing where like you often do things that you you think that okay, I'm in a very bad state, so if I post this online, I might get like some sympathy or Yes. whatever. Yeah. But you end up hurting other people more Yeah. because they have to question things that you can't think of because you don't know their POV, right? You don't Yeah. know what it means to be in somebody else's POV. So I don't know. He doesn't think about that
and that's kind of But troublesome the actually in thing his is, future he as thinks well. like he's the only one who's having like problem like these. Exactly, it's But not it's the not only. like that. It's not like that actually. He has to really Yeah. open his eyes and see that there are a lot of people who are Yeah. in deeper shit than him, or Yeah. even if they're not in deeper shit, they have their fair share of issues. Yeah. बट उसको So लाइक मेरे को बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड लाइक उसके स्टेटमेंट से और उसके बात करने के स्टाइल से ही थिंक्स इज इन वेरी लाइक डीप शेट प्रॉब्लम्स और फिर लाइक और सामने वाले बंदे आर लाइक हैप्पी एवरीवन इज हैप्पी बट ही डजंट नो लाइक जो बंदा डिस्कॉर्ड पे आ रहा है ही इज हेयर टू लाइक चिल एंड शेट सो दे डोंट शो देयर बैड साइड या फिर क्या चल रहा है उनकी exactly. लाइफ में दे आर जस्ट हेयर चिल करके दे वेंट टू लाइक बैक दे गो बैक टू देयर शिट लाइफ अगेन दैट्स हाउ इट वर्क्स Discord right now is probably like the most, I would say it's like the safe space for many people. या It's just they come here, they just relax, they don't have to reveal any part of their identity, they don't have to reveal any part of their या personality. They can just be a whole new person and not be judged about it. या But in real life, it's a very different scenario. वही So that's what I feel like usually Discord what happens changes with me people to a very big extent. आई कैन लाइक गो टू वेनो और यू रात को कि मेरे को नींद नहीं आ रही है आई एम हैविंग दिस बट लेकिन दिन में आई एम वेरी चिल लाइक रात गई बात गई वाला सीन है बिकॉज प्रॉब्लम्स Yeah. विल बी देयर ऑलवेज Yeah, you can't be stuck to those problems forever. अब रात को नींद नहीं आई सुबह में मैं सो गया समाउ लाइक आई वोक अप अराउंड 2 बजे 3 बजे बट इट्स लाइक रात हो गई ना आई हैव टू लाइक थिंक अबाउट माई डे बट उसका सीन आई थिंक लाइक कि अब रात भी गई अब आज दिन में भी सोचूंगा अब रात भी गई अब दिन में भी सोचूंगा Wait, there is no point of that. हाँ वही देयर इज नो पॉइंट तू अपनी लाइफ ही खराब कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे Sure, at the, Like- you can go ahead and be rough against yourself and think about whatever mistakes you made every single day. If you spend like 1 hour just contemplating your life, that is still considered normal. But constantly contemplating your life every single वही, minute, like वही, okay, रात हो गई, तू सो नहीं पाया, okay, तू सुबह उठा, you're like fuck, I couldn't sleep because of this. Then you start thinking about वही वही all those kind of things. You just keep continuing the chain, which is not which good, is not right? good but Sure, if you want to continue, you can be like, okay, आज मैं depression में था, हाँ tomorrow you continue, like you go back to normal, do whatever you can, do everything, then you start contemplating, again go in depression, and then just that cycle keeps going और on. समटाइम यू नो व्हाट आई थिंक आदि की लाइफ मेरे से बेटर जा रही समटाइम यू नो समटाइम आई इवन थिंक Right. इवन इफ आई हैव मनी लाइक इट्स लाइक आदि की लाइफ बेटर है या फिर योर लाइफ इज बेटर बट यू Yeah, नो there are व्हाट always things या like that. यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट कि इट्स लाइक आई Yeah, I हैव टू mean, वर्क फॉर दिस एंड ही गॉट लाइक हिज पेरेंट कैन डू दैट एंड शिट बट ऐसा लगता yeah, है it's बट understandable. हाँ समटाइम ऐसा नहीं कि लाइक आई डोंट गेट सुसाइडल थॉट्स एंड शिट आई डू गेट दोस बट लाइक आई समझ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से Yeah, no, I get it. Because see, again, I wouldn't want to ever say that I am in situation like Adi or something, right? I wouldn't ever want to say that I am constantly in that situation. नहीं बोलूँगा. I have gotten to that kind of aspects in certain parts of my life. Okay, सेम सेम but I am like more than blessed to have whatever I have right now because Yeah, I I'm can't happy. complain, dude. There is no reason for me to complain. My parents have done so much for me. I've gotten everything that I wanted. There is nothing left for me to complain, dude. There are people out there that don't get anything from their parents, Yeah. that have to do every single shit for themselves. But I don't have to deal with any of that, and that's that's one kind of thing which you don't have to think about Yeah, unless and until you are in that situation. actually. So that is something that I feel like most people take for granted, you know. Like उसका मैंने I like उसके parents he said they want like मेरे parents भी forced me but I'm doing it ना somehow I'm doing it कैसे ना कैसे I'm doing Yeah. D farm B farm whatever I'm doing मेरे को पता भी नहीं I don't even know my subject but somehow I am doing I will get the degree by like इस year के last तक तो but somehow I did because my parents did a lot of me for me or I can do this much for them at least this much Exactly. but You that the way yeah. the way he thinks you know like बस it's like अजीब like sure they didn't do anything for me, or even if they did anything for me, why should I give a shit? My life is shit, everything. He doesn't like I thinking sometimes feel broadly. he's ungrateful a lot like बहुत ज़्यादा ungrateful है about life Yeah, I don't know, I feel like he just doesn't have that. When he gets into that mindset, he has no control over his thoughts, is what I'm saying. Like for me, I feel like even if I go into this depressing state, there are things that I would think of and there are things that I wouldn't think of. like he's Like, for relatable example- sometimes I think my parents did nothing for me then Yeah, okay, it comes to my relatable, mind yeah. it comes to my mind like they did this and I was like what the fuck Exactly. I was like क्या होता क्या नहीं होता but फिर like end में they did like I have to do it I can do it 1 साल की बात है 1.5 साल की बात है 2 साल की बात है I can do this I can like cope Exactly. फिर So there is that thought process, even if it's not instantaneous, right? Even if you're annoyed, say you're annoyed because of something happened, okay? see And at that point of time, you are like,
not annoyed because you are in that depression state, and you're just like, I'm not going to think about anything. I'm just going to continue whatever the hell, and you don't give a shit about it. But later on, when you actually think about it, you feel that you feel guilty, right? Yeah. I feel like he doesn't reach that guilty state ever. I same bro. Like what happened अभी हम लोग की लोनावला की ट्रिप थी. I told them कि I'll go, but they wanted like कि मैं ना जाऊँ. But still they said yes. And मैंने कहा पैसे वैसे I have like ठीक है I have money. But still they gave me like 35,000 rupees still. And which तेरे is को big. हाँ which is like इतने में हमारी ट्रिप पूरी हो ही गई है. And फिर मैंने आके I like gave back whatever left थोड़ा थोड़ा. And it was nice, like मैंने कहा और फिर उन्होंने जाने भी दिया. It was not like इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. I was being sarcastic जब मैं तेरे को बोल रहा था. But Yeah. हाँ तो लेकिन still like they never went like मेरे father like he went like to many places. My mother never went to like airplane too, and she went let me go somewhere. And what I'm trying to say, so it Yeah, was no, I like get it. I nice get it. for me. they like मेरी बहन ने भी like she said जाने दो. उसकी तो trips वगैरह हुई हुई हैं पहले भी, but like मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे. she helped a lot. So when I think about it that way, so वो बहुत अलग हो जाता है, समझ रहा है. Yeah. I can do this much. फिर मेरे को ऐसा ही लगता है, and I try my best to do जैसे भी हो रहा है. Even if they like No, I taunt me feel and like shit. people like you, Anna, you are much more strong in some aspects, because you're kind of independent. You have to do shit on your own. And that's when you start dealing with a lot of things in life. I would say that in that case, you are like much more ahead of me. But there are people that just take everything for granted. It's kind of tough to see. Like I would still say that I am taking a lot of things for granted, and I am still like not mature at all. I tell you that. Like though I might like even remotely sound somewhat mature, but that is not exactly how I am. Just the way, just because I can speak decent English and shit, that's not how it works. But still I think Like, like you're mature enough, bro. nah, मतलब bro. Like that's what I'm telling you, right? There's two different kind of personalities that you have. One is with your family, one is with your friends, right? And it's a very different thing when it comes to family and shit. Like, I'm just nowhere near what you are. You're so much more responsible and independent that bro my I'm just family like, what do I do? Like when I think about these kind of things, like like this guy is doing so many things, he's earning money and shit, and I am just here doing nothing, just sitting every day playing games, sitting on my laptop doing random shit. It bothers me sometime, and that's when as that depression keeps carrying on, it finally hits for one day, for and me I'm like, for me मेरे लिए क्या होता है, it is like this guy is studying, he'll get a job, he'll be stable in life, this guy is going to Australia. For me it's like that. How long okay, I can because like manage this okay, PC gig and but shit. you are thinking about the part where it's like he's studying, हाँ. you are earning, he's studying. But You know the difference. but like Somebody life. who's already earning is like already considered very high in most people's um like I just know, I know. lives. But like in They life में know this gig is not stable. That's why I have like. it's not okay. There are a lot of things that are not going to be stable in life, but you're still earning and making, like you're paying so much for yourself. I know, You I know. have मेरे को you're in a situation where like I expected people, okay, there are people that spend like certain amount of money in investments and shit. They don't go over the top. But yeah, I I feel know. like you have broken my mind and like records of like there are actually अरे there students is a my age who can do all this. bro there is like इसके लिए बहुत मतलब बहुत पास्ट वाला सीन है, but I'll explain that to you Wait, someday. that's what I'm telling you, right? You have gone through a lot of shit. That's why I feel like you are much more independent and like much more responsible or mature in that kind of way. भाई And that's what I explain feel कर like, रहे अच्छा लग it's रहा है. associated with people like you. But when it comes to Adi and shit, no, it's just like, what has this guy gone through? Absolutely nothing. So अभी मैं I'll explain you like मेरे my father got like when I was 6 or 7 a lot of debt. ठीक है. So we Okay. were like financially not that strong, so it was like very hard for me to even get a Parle G biscuits at that Okay. time. So like gradually we like मेरे father ने he restarted his business like, तो उसके बाद we get to stabilize and shit. फिर मैंने like I suggested to my mom 2017 के टाइम पे we open up a YouTube channel, we might earn some money. So उससे हुआ, then like it took like last के 5-6 years में we have seen this financial growth, otherwise it was like very bad. That's why we don't have a car and shit. That's why like it is like that, समझ रहा है. It was like it is not like that we don't need a car, and now we are going to buy it. ठीक है, we are planning like आने वाले 6-7 महीने में we'll be buying a car and shit. We got like some decent property now, like we are stable, we are getting rent money. So that's why like जब मैं I think about like my past game, I didn't have that much to spend, so I'm like now I'll spend as much as I want to, on me.
No, no, I get that because you have told that before as well. You have mentioned this exact same point where it's like, तेरे past में you didn't have like a lot of money. So I So was. the point is whenever you get money, you have the opportunity to spend it, and that's why you spend it My so mother is casually. like, you And should save up some money, but I'm like, fuck it, I have some money, I'll spend more. I can yeah, I spend. mean, which is fine to an extent, right? Like Yeah. you're still earning more, which is a good Yeah. thing. As If it's long. something like, you earn something for the first time and then you're spending all of it in one go, and you're just like, okay, I don't care because I got the money, I can spend it on whatever. No, but you're constantly trying to earn money. That's something that I'm like, that's what I'm trying to tell you. Like you're much more mature on that aspect. You know how to earn money. You know how That's to why. do all That's of why those after things. spending all this money, I don't have any regret. Exactly. You like for me, it would be like because if I got money from my parents, I still do get money from my parents. Okay, I don't pay for anything My on my own. my father still like So give me pocket money, and I still take it. I'm thinking of like yeah, but you don't use it for much, right? nah. Like it's just cash, you know. I usually do online. Exactly. For me it's everything. They Yeah. pay for my college fees, they pay for my PG stay, they pay for my I Wi-Fi, they also pay for my also. every single thing, and I'm just sitting there taking everything and just studying. That's all. नहीं like And playing. मेरा भी this scene is like same. They pay for my transportation college का, they pay for my fees. I can pay myself, लेकिन they still pay it, समझ रहा है? They're like, you use your money Yeah. for yourself. We can do Which this. is understandable. As a parent, even Yeah. like I don't know if I'll ever become a parent. That's a different topic But completely. But like if I were to be a parent as well, I would probably be the same. Like, you spend your own money, you earned it, you're earning it, you'll probably understand the value this is of my it. duty. I'll do So it. I'll pay for whatever you need for now. Because that's my duty at the end of the day. It's Yeah. just unconditional love that I Have have to to give. Yeah. Yeah. This is the scene actually. भाई क्या अच्छा लग रहा है आज यार बात करके. रोज करना पड़ेगा क्या? ना भाई आज का सेशन खत्म करते हैं. गेम प्ले लगा ले वैसे गेम प्ले लगा दिया. हाँ, गेम प्ले बंद हो गया ये क्या? देख बेंच से तो खाना खा रहा है. इसको तो अरे भाई बढ़िया पॉडकास्ट चल रही है, आ जाओ. लेजिट पॉपकॉर्न खा रहा हूँ वही वही पता है. समझ आ गया तूने जैसे मुंह खोला. बट इट इज नाइस एक्चुअली, इट वाज नाइस. लाइक अच्छा लगा मेरे को बात. Yeah, I mean, I'm still open to these kind of talks. I've done this with Adi also. So as long as you don't end up becoming आदि like unstable and just be like, okay, I don't give a shit about anything else. Like, dude, Nah. I'm still there, dude. Like, I'm here majority of the time on this Discord, fucking doing whatever. I'm never going to get rid of Discord. That's one thing, and that's also because of my profession. I cannot get away from हाँ Discord. गेम डेवलपमेंट में डिस्कॉर्ड इज लाइक क्रूशियल. Game design, development, jo bhi ho, it's just always you're going to be on Discord. You need to be on servers, constantly socializing. But even though I can't, or it's not a matter of I can't, I just don't want to. So, uh, yeah. So I mean, I can't get away from Discord. But like, मेरा सोशल सर्कल का क्या सीन है, इट इज लाइक इट वाज डिसेंट पहले, ठीक है. आई यूज्ड टू हैव लाइक डिसेंट फ्रेंड्स, बट व्हेन दे न्यू क्या आई एम अर्निंग, तो दो तीन लाइक इट वाज 4-5 पीपल का ग्रुप, ठीक है. तो दो तीन आउट ऑफ देम लाइक दे वर नॉट ब्रिंगिंग मनी एंड आई हैड टू पे फॉर देम एंड आई वाज लाइक हैप्पी शुरू में. बट बाद में लाइक आफ्टर लाइक 1.5-2 साल बाद आई वाज लाइक भाई मैं कितना मैं मतलब आई यूज्ड टू कैलकुलेट सम टाइम, आई कैलकुलेट कहाँ गए इतने पैसे लास्ट में महीने में. wait, so you used to pay for your friends? हाँ या अगर वी आर गोइंग टू Wait, सम कैफे, आई what? यूज्ड टू पे फॉर माय फ्रेंड्स. इफ वी आर इवन ईटिंग आइसक्रीम, आई विल पे फॉर देम, लाइक दोस 2-3 पीपल. सो इट दैट्स व्हाई लाइक मैंने फिर उसके बाद आई सेड लाइक छोड़ो भाई, दोस्तों के साथ जाना बेकार ही है. Yeah, I mean, you still haven't changed a lot, you know. If I end up asking you cash or some shit, you would still give it, which is not good. The way I'll explain this, like it's one time you're asking from me, like एक बारी, ठीक है, out of like इतने सालों के बाद, ठीक है. Those guys were like they knew me for 3 years और last के 1.5 साल में I paid for everything, literally everything. Yeah, that's still. I see. I would feel the guilt, bro. I don't know why they wouldn't have anything like that. Like, ठीक है, I have also done the thing where my parents have this thing. Okay, they have specifically told me this that when I am giving you money, when they give me money, it's not my money at the end of the day, right? It's their money. Yeah. So they want me to help out as many people as possible. If there is somebody who can't pay for some shit, then go ahead, help him out. You'll it's probably fine, make but a friend. that guy can pay ना, बात हुआ है. Exactly, but like constantly doing the same shit, even you get annoyed. You're just like, what is going on, So bro? that is Like, what happened. That's why I मेरी can't be outing doing this बिल्कुल for you बंद हो every गई. single time. Sure, it might be like 30 rupees every single day, but that adds up on to like whatever. 3 years you see, meaning that's like fucking, what, 90K or some shit. I don't even know. Yeah, वही. It was like even if we are going to a cafe, ठीक है. So I was thinking like this guy short on like 500 rupees, so I have to pay for them. It's fine, just order. You know when we are going like बहुत issue होते थे, so I just said कि छोड़ भाई अब बाहर जाना कम कर देते.
So पहले मैंने Nah, that's kind of crazy, yeah. yeah, तो फिर मैंने I stopped picking up their calls. Now yesterday he called me, MJ यहीं बैठा था, but that guy was still nice, जिसने कॉल किया था. Yeah. हाँ, तो ही वॉज सेइंग कि आजा मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, इट्स फाइन, 4 बजे के बाद कॉल मी, बट आज उसका कॉल ही नहीं आया, सो आई वाज लाइक छोड़, उसका नहीं आया तो मैं क्यों कर. Yeah. Understandable, है. क्योंकि मेरे को मन भी नहीं था ना जाने का, बात हुआ है, इट्स लाइक दैट. Yeah, I mean there are some people. Wait, which brings me to this particular weird thing that I had. Okay, so it's like I told you, right? I have very few friends that genuinely like would ever want to like meet up and shit, right? For very strange reason, like I had this other group that I was in as well, but I was never very good friends with them. And those are the people that I ended up like. This was when I reached my fun bullying stage. It was like I wouldn't like hurt you way too much, but I used to constantly be like, you know, hating you or some shit, and just for fun. But it's not like actual serious. Like I wouldn't go ahead and like bring a knife and like poke, like you know, do It crazy was shit. like I for wouldn't do just that to kind of pass shit. time in school ना, समझ गया मैं. Exactly. So हाँ. it used to be that fine. Obviously, they didn't like it much, but those people ended up calling me for a get together because one of our friends, and this is a girl, okay, this the girl who's leaving, she's leaving to US for her masters. So that one guy ended up calling me, and I was just like, damn, wait, am I actually being called to a group other than what I expected to be called? You know, the group that I have. I thought only they would call me, but why am I being called by this group? I have no idea, and I had to like question a little bit, like, should I really go? Will they really give a shit about me? Will they even remember who I am? And then What you did. when I actually went there, obviously I have a different personality. I don't know, I change personalities very fast. So um, I obviously was normal with them. I didn't have any awkward moments, nothing. And I felt like it was normal, dude. It felt so great catching up with them. The thing is, what And happens is even if you bullied them, na, school में it is yeah, fine. Like people usually move on school के बाद. The people I bullied, yeah, I got bullied by, they're still my friend. We talk on Insta sometime. It's fine. Like he was yeah, telling me he opened up this, he's doing this. The guy who bullied me and the guys I bullied, they're like good friend. He met me and he was asking about CS:GO trading. थोड़े time पहले I gave him like treat to this cafe, and it was nice. Like we all matured up, na? So that is why it's like different. और स्कूल की बातें एट द एंड ऑफ द डे दे लाइक वी पीपल यूज्ड टू लाइक स्कूल में ही रह जाती हैं वो बातें सारी. और इट इज़ लाइक अ डिसेंट मेमोरी. दिस गाय यूज्ड टू बुली मी एंड नाउ ही इज दिस नाइस. ऐसे समझ रहा है. इट वेंट लाइक दिस. मेरे लिए दिस वेंट लाइक दिस. द गाय हु बुलीड मी इन 6-7 now is a good friend. He sometimes even call and ask how am I doing. damn, that's crazy. Yeah. People like usually what I think is he's having regrets after bullying. Yeah, there are even I would say that to a certain extent I feel like I shouldn't have done what I have done. Yeah. But there are still the weird part is I still have parts of me where I'm like, It's fine. I mean, I didn't go too over the board. I don't know. Yeah, Like bullying. I still have that thing, like, you know, okay, I was probably doing the wrong thing, but I don't know. Like I'm trying to. I don't know how to explain this. This is very weird. In 11th, 12th, I bullied a lot, bro, a lot. Same. Actually, from 9th to 12th, in between that, it was way too much. मैं बहुत ज़्यादा. Before that, it was just I don't know. I used because to do they were some crazy younger, shit. ठीक है, ऊपर से, and I was like, I was already, मैं मतलब you have seen me, I was bigger, उससे भी ज़्यादा बड़ा था मैं, तो they were already scared. Yeah, even I was fat, so yeah. Makes sense. और Probably makes sense that nobody wants to mess with the fat bully kid. और one time what I did है, एक बंदे को ले जाके like मैंने एकदम बेंच के अंदर उसको घुसा जाता like. Yeah, I know that. मैंने so similar to what you just mentioned, it might sound very absurd, but मैंने एक बंदे पे टेबल फेंक दिया. So but मेरा like scene क्या full-fledged था, table. that guy was also big, ठीक है, he was big like, ठीक है, और मैं भी big था, so it was like dominance वाला shit, समझ रहा है? So I went in. Everybody is like, holy shit, guys, back out, this fight is like legendary so World what War III. happened is like वो होते हैं ना बेंच के कॉलम्स होते हैं. I went, मैं उसको पीछे तक लेके गया धकेलता हुआ, क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया था गर्दन से, तो मैं उसको लेता गया और मैंने उसको उठा के एकदम बेंच में डाल दिया, तो उसने छोड़ दिया फिर, और उसकी कमर वगैरह में भी लग गई, लाइक उसके बैक में कुछ हो गया था. तो इट वाज लाइक फिर उसके बाद हो गया था nobody ever talked shit to me उसके बाद. Yep. When it, I don't know if that's I don't know if I should say that's a good thing or not. It's like, you know,
you have shown your presence. Yeah. If you know what I mean. Yeah. It's like nobody's gonna fuck around with you This unnecessarily. guy will fuck you if you will fuck with him. Yeah, so you know for a fact that you are not open to bullying anymore. हाँ. Like nobody can bully you. In 6th 7th it You was like obviously you don't need to bully anyone after that, but in 6th but yeah, 7th you know what. I still bullied after this. I literally have a video like there is a fat guy and my friend is like having sex with him. Like not What? literally like कपड़ों के ऊपर से he's like trying to अच्छा वैसे have humping sex. type shit. Yeah, humping time. और that guy is like fucking annoyed और मैं वीडियो बना रहा हूँ and I'm seeing मार गांड मार इसकी. हाँ हमारा भी होता है वैसे. I still have a video as well, but it's not me bullying, it's my friend bullying, and I was just like, damn, that's so funny, dude. ना मेरी में तो it's like मैं पूरा I am guiding him कि what to do, what to not to do, and that guy is वो हमने भी like किया. legit small, ठीक है. वो बंदा जो कर रहा है it's like वो बंदा अगर चाहे सामने वाला बंदा he can like एक हाथ से उठा के फेंक सकता है, but he's not doing anything because he knows he will do something. बात है. What is this guy doing, bro? My God. I don't know what he's making. वही दूसरा लगाते हैं. मुझे मूतना है वैसे. आज का सेशन guys we will end here. I think we'll end here. It was a good session, in fact. In fact, yes. Thank you Yeah. for watching, guys. This was a good session. Yep, thank you for watching, guys. It was a great time. Time I well think it was spent. Thank you so much. yeah, time well spent. We got to know each other a little bit. Forget MJ, he doesn't exist. Yeah, MJ's shit. Yeah, MJ is absolute dog shit. Thank you. Thank you. Good night.